ऊपर आन दो सॉलिड नंबर क्योंकि लोड नहीं अरे ना तो लगा लो तो मारेगा अंदर बाइक वाला वहाँ आपको पहले बोला आइडिया नहीं वापरी वाला लेता भी नहीं Good morning, Tiwari sir. Tiwari sir.
Good morning, everyone. I welcome you all in second day of International Multidisciplinary Conference on Contemporary Approaches and Applications in Physical Education and Sports Sciences. Today, we will start our fourth session with, we have with us Dr. Professor Jayashree Acharya as a resource person. And after this session, fifth session will be paper presentation, and sixth session will also be the paper presentation. And on seventh session, there will be a valedictory ceremony. So we are going to start our session within few minutes. roll number. मेरा शुरू है काम करना बोलिए रोल नंबर Okay, friends, we are going to start our session. Now, I would like to hand over the mic to Dr. Avinash Seetharmale, sir. Dr. Avinash Seetharmale, sir. हो बसतो कॉन्फरन्स सुरू झाली पाहिजे ना थोडीशी इंटरनॅशनल. Good morning, one and all, and welcome to the participants in this International Multidisciplinary Conference. Today's resource person of the first technical session of the second day is Professor Jayashree Acharya.
Welcome, madam. In this conference, I would like to introduce of Jayashree ma'am, former first Dean, Board of Governors, member and founder member, First National Sports University, Manipur, India, Central University from January 2018 to October 2020. Now she is working as a professor, Department of Sports Sociology and Director IQAC, LNIP, Gwalior, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Also, she has worked under SAI, LNCPE, Trivandrum for 20 years and then joined LNIP from November 2007, still continuing, but from September 2017 was engaged in the project NSU, National Sports University at Imphal. She has traveled around 40 countries, passionate about Olympic Games, attended all last 40G, Athens 2004, Beijing 2008, London 2012, RIO 2016, presented more than 50 research papers from last 32 years, worked in numerous capacity. Biggest challenge was developing NSU. Now it has taken up with nearly 260 students in a short span of not even 3 years and started 4 years BSc sports coaching for the first time in India. Courses running at NSU apart from BSc sports coaching are MA sports psychology, MSc sports coaching, BPS, etc. Her did complete coach education program in badminton from BA of England. Welcome, madam. Then first technical session chairperson are Dr. Vishakha Joshi, madam. She is working at Dharampet College, Nagpur as a director of physical education and sports. She represents university in the games of Kho-Kho. Nowadays, she is also member of Physical Education Board of RTM Nagpur University. Thank you. Welcome, Acharya madam. Thanks. Thank you, Titar Mare sir. Now I would like to invite Dr. Professor Jayashree Acharya ma'am to start her session. Dr. Professor Jayashree Acharya ma'am. Thank you. Thank you so much. Namaskar to all of you present over here. Or the topic, without wasting much of time, the topic I would like to discuss is मेरी स्क्रीन दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है? Is the screen visible? Yes, it is visible, ma'am. Okay. So the topic that I will be discussing with you is mental health issues and psychological factors in athletes, prevention and coping during present time. मतलब अभी क्या चल रहा है और कैसे इसका prevention and coping करा जा सकता है. That will be my topic of discussion. और when we say about this topic, जैसे आप लोगों को पता है, suppose मैं आपको पूछूं अभी how am I feeling now, there will be mixed feeling. अभी जैसे group बड़ा है and online है, it becomes very difficult to take a test or something. लेकिन जब हम कभी किसी को पूछते हैं कि how I am right now, आप लोग जैसे यहाँ बैठे हो, if I ask you, I will get numerous answers so far as your feeling at this moment is concerned. Now, ये जो feeling है, all of us, हम लोग सारे, we have gone through a phase, एक साल हो गया है. There was a silence, sound of silence, and which was very difficult for all of us, क्योंकि हमें इतनी silence की आदत नहीं थी.
So this silence had become very difficult for us, but again we are trying to come back to new normal जिसको कहते हैं. लेकिन there has been always कुछ ना कुछ खबर आता है कि there might be something again coming. And this situation has brought a change in our lifestyle. हमारी lifestyle में एक change आ चुकी है. And we all have experienced this change. जो lifestyle change में ठीक है हम लोग जा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है कि let me not be affected by this particular virus. Now here, when we say, here let me quote you. One of you know him very well. An athlete, an icon India has, Avinav Bindra. What he said is, post coronavirus world could be blessing. उसके उनका कहना था हो सकता है ये blessing हो, क्योंकि ये जो 1% of athlete जो डिफरेंस करते हैं या इकोसिस्टम में जाते हैं या वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस में जाते हैं, here what has happened, ये सिचुएशन जो है ये हमारी एथलीट को ये बता देगा कि how we can build up for our athlete when this kind of situations are there. And according to him, he felt that this situation is a blessing. हो सकता है हमारे लिए एक blessing हो. Then here I have brought a statistics. ये जो updated April 21st 2020 को हुआ था, जबकि बहुत सारे because of this pandemic and discuss of this problem. Am I audible? सुनाई दे रहा है? कुछ disturbance आ रहा है मेरे को. Yes, you are audible, ma'am. Okay. So there have been lot of party जो affect हुए हैं during this coronavirus. Sports industry हो गया, athletes हो गया, coaches हो गया. और अभी हम जब 2020 Summer Olympics की बात कर रहे हैं, there is a big question mark कि ये इसका नाम रहेगा Summer Olympics, but will it be there? There is uncertainty. तो आज के दिन में हमारे लाइफ में there has been certain situations which are full of uncertainties, लेकिन हमें इसी के साथ रहना पड़ेगा. And athletes are no different. May I request किसके स्पीकर शायद ऑन है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज ऑफ कर दीजिए. So here when we say about all these things, we have to understand about the mental health, because in this situation, our mental health has been very strongly affected when we talk about the mental health aspect, because this mental health जो include करता है हमारा emotional, psychological, social, all aspect, because ये mental health is very important at every stage of life, childhood से लेकर adolescence to adulthood, because हम सब experience कर चुके हैं कैसा रहा हमारी journey. अगर किसी को पूछो the time and all, various people will have various view how they have enjoyed, how they have learned, how they have done the things in different way. And here so here when we say about this aspect of mental health, coming to athletes and mental health, जो आज मेरी topic of discussion होगा, this athletes और mental health, because society में बहुत लोग athletes को like a super human सोचते हैं, जो Olympian होते हैं, जो athletes होते हैं या elite athletes होते हैं, लेकिन ये भी सही, ये भी एक fact है, ये जो elite athlete है, they are very vulnerable to mental health disorder. मतलब क्योंकि उनके पास competitive pressure इतना ज़्यादा होता है, they also start having lot of mental health disorder so far as this aspect is concerned. So here, when we talk about this aspect of mental health and athletes' mental health, here मैं आपके सामने ये देखिए 3 athletes का लाई हूँ. एक है माइकल फेल्प्स, एक है सरीना विलियम्स एंड एक अपना विराट कोहली. अगर आप इनकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे that here they are all world class athlete, लेकिन माइकल फेल्प्स का स्टेटमेंट आप पढ़िए, after every Olympics I think I fell into a major state of depression. I would say was probably the first depression spell I went through. मतलब ये जो चीज है ये it is not a smaller or bigger, even this top class athletes say Serena Williams say I have definitely not been happy, especially when I had that second foot surgery. I was definitely depressed. I cried all the time. I was miserable to be around. Same way,
when we talk about Virat Kohli, I have gone through a phase of my career where I felt that it was the end of the world. So हम जब ये सब चीजें बात करते हैं, ये किसी भी एथलीट either at a very top level or at a lower level, किसी लेवल पे भी ये एथलीट्स को मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है. एंड हम जब ये कोविड की बात करते हैं, डेफिनेटली जो एथलीट्स है उनकी मोमेंटम ब्रोक हो चुका है, उनकी रेस्पिरेटरी हेल्थ हैज बीन, काफी एथलीट्स को कोरोना भी हो गया है. एंड मेजर इवेंट्स अभी धीरे धीरे द लाइफ इज कमिंग बैक, लेकिन ये जो आ रहा है लाइफ इज कमिंग बैक, इट इज कंपैरेटिवली इन ए स्लो फेज, इट इज नॉट द वे इट वाज. Then when we say about this connection between mental and physical health, try to understand. WHO also has defines when we say about health. Health is a health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. There is no health without mental health. That is what WHO says. So when we say about the relationship between mental health and physical health, definitely अगर जिनकी poor mental health होगा, risk factor उनके लिए chronic physical conditions के लिए ज़्यादा होगा. And जिनकी mental health conditions are high risk, then physical condition also deteriorate होगा. इसीलिए हमें अपनी physical और mental health में एक balance रखना पड़ेगा. एंड जब हम ये स्टेज की कह रहे हैं और एथलीट की स्टेज की कह रहे हैं, हमें इस सिचुएशन में एथलीट्स का ट्रेनिंग वगैरह जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग का शेड्यूल ब्रेक हो गया था, जो अभी इट इज कमिंग अप, उसके साथ साथ उनकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ हमें उनकी मेंटल ट्रेनिंग या साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. नाउ व्हेन वी से अबाउट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, there can be numerous mental health disorder, जैसे eating disorder हो गया, depression हो गया, suicide हो गया, anxiety and stress, overtraining, attention deficit, hyperactivity, mental. So there can be numerous mental health disorder which can have so far as an athlete is concerned. The question is, I think somebody is scratching, कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ रहा है स्क्रीन में. सो हियर व्हेन वी से अबाउट दिस मेंटल हेल्थ एंड एथलीट सिस्टम, देयर इज ए इकोलॉजिकल सिस्टम मॉडल फॉर एलीट एथलीट्स मेंटल हेल्थ. एंड हम जब ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम का कहते हैं, दो ये एलीट एथलीट के लिए है, द सेम कुड बी अप्लाइड फॉर द यंग एथलीट्स ऑल्सो. लाइक जब हम यंग एथलीट, वो कैसे कोपिंग, उनका स्किल, एटीट्यूड कैसा है, कोचेस, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब उनके साथ कैसे हैं. देन द इंडिविजुअल, हाउ ही और सी इज मैनेजिंग. एंड जब हम मैक्रो सिस्टम के बारे में करते हैं, द नेशनल स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट, पब्लिक, सोशल मीडिया, ये सारे चीज, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज एन एथलीट इज कंसर्न. And here when we say about a mental health promotion spectrum, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अभी उस जो एथलीट है, there are some persons raising hand. कोई क्वेश्चन है आपको, कुछ है? some people are raising hand. okay, so here जब हम इन चीज की बात करते हैं, that is ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में when we are talking about this spectrum, तो हमें प्रिवेंशन करना है, ट्रीटमेंट, कंटिन्यू केयर. और हम अगर एथलीट का प्रेजेंट सिचुएशन हमें पता है, हम इस प्रेजेंट सिचुएशन में हम कैसे अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, कैसे रिकवरी कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स वी एज कोच, एज टीचर, एज पेरेंट्स, एज गार्डियन, हमारी जो अलग अलग रोल है, whatever is our role, we can very well play an important role so far as athletes thing is concerned. And when we say elite athlete and mental health and well-being framework, you just try to understand competitive athletes and depression बहुत common चीज है, क्योंकि जब वो professional, because many times this competitive athlete, they go through lot of problems, it is not that easy. And here when we say about कि हम उनकी जो, how do we build their mental health literacy, how we prevent,
how we give and how when we talk about the specialist mental health care हम उनको दे सकते हैं, because there can be numerous reason जब हम एथलीट की बात करते हैं जो स्पोर्ट्स लेता है और स्पोर्ट्स थोड़े देर के बाद छोड़ भी देता है, बिकॉज जिसको हम ड्रॉप आउट एथलीट कहते हैं, जो यंग एथलीट है जो ड्रॉप आउट होते हैं, हाउ आफ्टर ए पर्टिकुलर स्टेज दे ड्रॉप आउट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कोप अप, वो इस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाते हैं एंड उसके बाद दे ट्राई टू ड्रॉप आउट. And there can be numerous reasons for that dropout, but certain major reasons are they are not able to take the competitive pressure. Now, what are the mental aspect used in sports psychology? Already आप लोगों की 2-3 सेशन मेरे नॉलेज में हो चुका है जिसमें आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ होगा about various things. Say for example, there are numerous aspect. ये कुछ चीजें हैं लेकिन ये नहीं है कि यही सारी चीजें हैं, नहीं. आप अपने आप जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं, you can very well share many things of your own also. But here I have listed some of the very common thing like goal setting, imagery, performance planning, sportsmanship, leadership, attention control में concentration, development of self-confidence, self-esteem, cognitive behavioral self-regulation, emotion management, clinical intervention. So here what has happened is all these things, it is how, because जब कोई एथलीट तैयार होता है उसको 10 साल 12 साल लगता है to reach to that particular level. ये नहीं कि ओवरनाइट कोई सक्सेसफुल बन जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ता है एंड इन दैट प्लान हाउ यू कीप वेरियस, देयर आर न्यूमरस एस्पेक्ट. आई एम टॉकिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. जब हम न्यूट्रिशन की बात करें, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट बात करें, बायो मैकेनिकल एस्पेक्ट बात करें, देयर कैन बी न्यूमरस थिंग्स व्हिच गोज ऑन to make an athlete what an athlete is or how that athlete becomes an elite athlete. Here, as I told you today, my discussion will be mainly towards the mental health aspect of the athlete, क्योंकि ये topic is not discussed at length, but ये कोरोना काल ये topic को बहुत highlight कर रखा है. So here suppose ये एक निम्हांस का, when we talk about our national mental health survey by निम्हांस बैंगलोर इंडिया का है, ये जो सर्वे है इसमें दिखाता है कि 13.7% इंडिया का जो पॉपुलेशन है दे हैव मेंटल डिसऑर्डर, 10.6 रिक्वायर इंटरवेंशन, 1 in every 20 people in India suffer from depression, 10% of population has common mental disorder, 1.9% suffer from severe. So when we talk about all this, and the most important aspect, the treatment gap for all mental health disorder is more than 60%. So here what has happened, when we say about all these aspects, इसमें substance abuse, alcohol, tobacco use, drugs, mental illness, so many things are, this is for then. So जब हम एथलीट की बात करते हैं, एथलीट्स आर ऑल्सो इंडिविजुअल हु कैन बी, एंड नाउअडेज बहुत सारे एथलीट आप भी जानते हो, they have started becoming victim to dope, they have started becoming victim to various other aspects by which their health is getting affected, and more so is the mental health. Question is how many athletes have mental? Approximately, ये जो आप डेटा देख रहे हो, it is an approximate, ये नहीं है कि concrete डेटा नहीं है, it is approximate डेटा जो है कि there are athletes जो stress, burnout, depression, anxiety में रहते हैं. There are athletes who are having tremendous amount of eating disorder, but 35% of elite athletes suffer from mental health. ये जो है there is 35% is a very good number. अगर हम calculate करें percentage wise, the elite athlete they suffer from various mental health issues जिसको कि हम ignore करते हैं. We never talk about it, neither the coach nor the athlete nor parents, because हमारे society में this is like a taboo. लगता है कि अरे हम mental health के बारे में बात करेंगे, या कुछ people may think in a different way, which is very very wrong. Now क्या मिथ्स और ट्रूथ्स है, बिकॉज ये मेंटल हेल्थ जो है अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट लोग इससे बारे में बात करने में मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं.
बट मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, इसमें हमारा इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल वेल सब चीज आता है. एंड हियर दैट अपनी जो मेंटल हेल्थ के लिए देयर आर मेनी फैक्टर्स लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एक्सपीरियंस इन लाइफ, फैमिली हिस्ट्री, and numerous things which comes, and how are we going to overcome from that particular thing, or how are you going to help somebody in this particular thing. That is what is very important so far as our mental health is concerned. Now moving further about this, moving further, there can be many reasons. यहाँ लंबी चौड़ी रीजंस की लिस्ट लगाए. देयर कैन बी मेनी रीजंस जो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को, एक स्टूडेंट एथलीट और ए यंग एथलीट, देयर कैन बी many reasons which can affect so far as an athlete is concerned. Here a long list I have given. I am not going to go very detail about each and everything. Few things I will go, like conflict with coaches or injury और क्लास, या कोई जॉब में है, या फैमिली और रिलेशनशिप. One of the very big thing which I have put is somebody wants to do the sports, the financial pressure, or alcohol or drug. But there can be numerous violence, so many things which can affect so far as a student or a young athlete is concerned. So here when we say about so many reasons, and apart from that, you can also list down your own reason when you know about the things ki what exactly it is. So here, ये जब हम इन सब चीजों की कहते हैं, one of the physical and psychological effect, as you know, there are many athletes who all take various dope or steroids or some other agencies. And these are, when we talk about any of these physical and psychological effect, that can be it can be mania, mood swing, depression, aggression, high cholesterol, nosebleed, hair loss, fertility problem, long list of things which can, and this can be also one of the reason so far as the mental health of the athlete is concerned. Moving further, when we say about all these things, moving further, like specific mental health symptoms, which is, if you can see, it is sleep disorder or depressive or suicide tendency or anxiety or PSTD or eating or attention deficit or by so many disorders which can happen. And many times what happens when we see certain things, we just neglect it. And हम उसको careful, we don't become careful, we try to neglect it. And that negligence costs us more than when we identify and try to help an athlete. So when we say about sports, athletes, mental health, also it is equally important, हमें एक चीज समझनी चाहिए, sports as a culture. अभी इंडिया में स्पोर्ट्स इज कमिंग अप इन ए वेरी बिग वे. पहले स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर नहीं लिया जाता था, लेकिन आज के दिन में स्पोर्ट्स को एक कैरियर के हिसाब से लिया जाता है. और द कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स हैज बिकम वेरी डिफरेंट. स्पोर्ट्स एज ए कल्चर, बहुत यंगस्टर स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर दे आर टेकिंग. इट इज कमिंग अप इन ए वेरी बिग वे. लेकिन द प्रॉब्लम व्हिच व्हाट यू कैन से problem which many people are not trying to understand is when we are talking about sports as a career and all those things, that is, though it is the sports as a culture which we are taking जो आ रहा है, अभी इसको कैसे लिया जा रहा है, how they are taking it. They are taking it in a right way, in a wrong way, और इस जो कल्चर को एडॉप्ट करते हैं कि हमें एक स्पोर्ट्समैन बनना है या कैरियर बनानी है, इसके बारे में मैं थोड़ा आई एम गोइंग टू हाईलाइट, बिकॉज देयर इज वन एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट टॉक्सिक स्पोर्ट्स कल्चर. और ये स्पोर्ट्स एज अ कल्चर और टॉक्सिक स्पोर्ट्स कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज जब एक अमेरिकन एथलीट थी, केन स्टोरी, आप इसको नेट में भी देख सकते हैं, हाउ ये जो केन करके ये जो लड़की थी, शी वाज फ्रॉम यूएस, शी वाज अ वेरी गुड एथलीट,
लेकिन हाउ कोचेस, स्पॉन्सर और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ उसको कहे कि तुम्हें अपनी वेट रिडक्शन करना है, एंड वेट रिडक्शन करने के चक्कर में उसको बहुत सारे मेडिसिन वगैरह और कुछ कुछ दिया, जिससे कि उसकी हेल्थ की डेटोरिएशन शुरू हो गई। और जैसे आप लोग आजकल जानते हो, आजकल इवन स्कूल स्पोर्ट्स में बच्चों ने आजकल ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया है, इवन इन स्कूल स्पोर्ट्स, forget about university and national and international level. So here ये जो है, if you can see this photo, two picture I have put before you, that is how this girl Mary Kane who was there, and see her body on the other photo here. If you can see her body condition, you can see how lean, thin, and for a price you have to pay for getting some success in a different way affected her health. And when her physical health was affected, naturally her mental health तुम्हाला खूप राग येतो भाषण ठेवलं की. and इनॉग्रेशन मध्ये तुम्ही I think I'm able to hear a voice. Can you please mute the mic, whosoever is speaking? So here, when we say about this Mary Kane and all those things, जब आपको time मिले, आप Mary Kane की video you watch it, then you will come to know about it. So here, एक दूसरी बहुत important चीज है जिसको फीमेल एथलीट ट्रायड कहते हैं, जो कि आज के दिन में many female athletes are getting क्या कहते हैं affected, जो यंग वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ये इस चीज में बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, जिसको फीमेल एथलीट ट्राइड कहते हैं. एंड दिस फीमेल एथलीट ट्राइड इज लाइक ये जो है डिसऑर्डर ईटिंग, रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, नॉट ईटिंग, मेंस्ट्रुएशनल डिस्टर्बेंस, लो बोन मिनरल डेंसिटी, हाउ these things also affecting so far as an athlete's performance is concerned. And when we talk about how these things not only affecting the physical health, also affecting the mental health of an athlete. So all these things which were really neglected, now we are trying to understand this phenomenon. And here when we say even IOC, that is International Olympic Committee, ने एक स्टेटमेंट दिया है on relative energy deficiency in sports. This relative energy deficiency in sports में उन्होंने कहा है कि how beyond female athlete tried, this particular thing also, that is relative energy deficiency in sports, how it causes various impairment about menstrual, bone health, immunity, and ultimately ये आपका mental health को affect करता है. एंड जब हम इसको कहते हैं अबाउट दिस रिलेटिव एनर्जी डेफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स एंड ऑल, क्या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, बोन हेल्थ, मेटाबॉलिक, ऑल दीज थिंग्स, इम्यूनिटी, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, एंडोक्राइन, सो ऑल दीज थिंग्स naturally affecting so far as an athlete's mental health is concerned. And these health consequences of this relative energy deficiency, ये performance में decrease लाता है, because डिप्रेशन, ग्लाइकोजन स्टोर में डिक्रीज, मसल स्ट्रेंथ में डिक्रीज, इंजुरी ज्यादा बढ़ रहा है, इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग. सो व्हेन वी से अबाउट दिस टॉक्सिक कल्चर एंड इंडियन एथलीट, आज के दिन में इंडियन एथलीट भी इस टॉक्सिक कल्चर का शिकार बनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियन एथलीट, उनका लैक ऑफ नॉलेज कहिए, एजुकेशन कहिए, इनसिक्योरिटी कहिए, एंड सोशियो इकोनॉमिक, द लिस्ट आप लंबी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन दैट इज व्हाट इज अफेक्टिंग सो फार एज इंडियन एथलीट्स आर आल्सो कंसर्न. And main thing is we have to really educate our athlete that apart from this training, they should also understand other aspect of toxic sports culture, drugs, mental health, numerous aspect there. और सिर्फ girls नहीं हैं, even boys. Even many boys and many male athletes are also getting affected by this toxic culture. And there can be आजकल in India स्कूल स्पोर्ट्स में डोपिंग एंड टॉक्सिक स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स स्पोर्ट में कभी कभी बच्चे अपनी मसल्स बनाने के लिए, बॉडी को दिखाने के लिए, एंड ट्राइंग टू डू सर्टन थिंग्स व्हिच हैज बिकम ए वेरी स्केरी थिंग सो फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न. इसीलिए यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ ने रिसेंटली काफी गाइडलाइन दे रखा है कि दोज पीपल हु आर टेकिंग स्पोर्ट्स,
those who are participating, कोई जरूरी नहीं कि always it should be competitive sports. It can be recreative, it can be health, it can be fun, it can be fitness. न्यूमरस एस्पेक्ट्स में स्पोर्ट्स करा जा सकता है. सिर्फ कंपटीशन 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 और विनिंग के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए. और यूनिसेफ ने 10 प्रिंसिपल इन 3 कैटेगरीज, दैट इज कैसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कोचेस, स्पॉन्सरिंग कंपनीज और एडल्ट एथलीट्स एंड पेरेंट्स एंड गार्डियंस, कैसे ये लोग ये सब चीजों में हेल्प कर सकते हैं, so that जब हम एक एथलीट की बात करते हैं, we can get a right kind of athlete with right frame of mind. And you can see here I have just put a paper cutting कि कितने इंडियन एथलीट है जो डोप टेस्ट में फेल हो रहे हैं. And when we say about mental health activities, हम बहुत सारे फिजिकल ट्रेनिंग ये सब तो जाएगा, but along with this physical training, all these things, there can be lot of mental health activities a coach can give, or a psychologist can give, or parents can give, or teachers can give. It can be meditation, it can be CBT, it can be thing. And here I won't go very detail about it and all, but we can plan lot of things so that we prepare a better athlete, एक अच्छी athlete हम बनाएं जो कि game. And one thing I will tell you here is the worry tree. क्योंकि जब हम एथलीट की बात करते हैं, जो ट्रेनिंग की बात करते हैं, और स्पेशली इन दीज डेज, स्पेशली एथलीट्स, मैंने कम से कम काफी सीनियर एथलीट्स ऑल आर वरीड कि क्या होगा, विल द लाइफ बी बैक टू नॉर्मल, कैन वी पार्टिसिपेट, क्या होगा हमारा, हमें जिनकी मतलब लगता था कि हम इस साल में परफॉर्मेंस दे सकते थे लेकिन दे नहीं पाए. So here when we talk about this worry tree, how we can make the worry tree go, because life is very precious, and this precious life, it is not that only this is one aspect. So how you can make pillars of happiness, if want to be happy, कैसे आप उसमें बढ़ा सकते हैं, how you can bring this particular thing. And definitely there has been, life post COVID, there has been a growth of nationalism, and my nation first has becoming the slogan. And we are Indian, and we have lot of religion, caste, culture, but we are one. And how we can remain, make the athlete remain motivated, कोई single yardstick नहीं है. You can plan numerous things, because जो वर्ल्ड क्लास अचीवर होता है वो एक दिन में नहीं बनता, सालों लग जाता है उसको, 10 साल 12 साल लग जाता है. लेकिन हम कैसे उनको मोटिवेटेड रख सकते हैं, आइदर यू कैन अप्लाई सर्टन फोकसिंग टेक्निक्स वगैरह आप कर सकते हैं, और देयर कैन बी ए फोकसिंग टेक्निक, सपोज कोई अगर रिलीजियन के साथ ऐड करता है, यू कैन डू इट इन ए way of a Christian inspiration, or you can do in a Muslim way or Buddhist way, कोई भी way अपनाओ, कोई religion कोई भी way अपनाओ. Thing is how you can keep your mind healthy and happy. That is what exactly matters over here. And when we say of the ingredients of for a mental health, so for me I feel we should try to love what we do, we should have faith, we should have peace within ourselves, we should have faith, we should have love, and we should hope. So that the main thing is, हम जब आज के दिन में जो बहुत सारे बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, एथलीट्स हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, यंग एथलीट्स, मीडियोकर, elite athletes, definitely this pandemic, we can, this stage, we have to keep the athlete definitely motivated, so that they are peaceful within, they have faith, they have love what they are doing, and they have hope, so that they are able to achieve what they wish to achieve. क्योंकि ये एक दो दिन में नहीं होता है, it takes a long time to achieve something. So the topic what I wanted to share with you all is that how in this pandemic stage, when life has become so very uncertain, so very complicated, or athletes are also going through a lot of जिसको कहते हैं, they are going through various processes of uncertainty, how we can keep them mentally healthy apart from physically, वो तो जो कर रहे हैं, but it's very important that they remain mentally healthy. And definitely once they remain mentally healthy, they have a belief,
they commit themselves, they have a constructive evaluation, they know how to control, how to keep focused, and how they can be mentally ready so that they are able to achieve excellent performance, whatever field they have to get. So with this, what I could say, that is how we can protect our athlete from this toxic culture, क्योंकि हमारी जो मतलब हो रहा है, जो ट्रेंड अभी हो रहा है, and various toxic culture which it is, and both for male athlete and female athlete, we have to be very careful, because खेलो इंडिया वगैरह में हजार एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कितने ऊपर तक जाएंगे, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज अर्लियर दे एंजॉय, बट वो जो प्रेशर होता है, तो द वेरियस थिंग, रिसेंटली ऑल्सो यू नो वन ऑफ द रेसलर who lost a tournament and committed suicide, which is very unfortunate. एक टूर्नामेंट अगर मैं तुम्हें मेडल नहीं मिला और तुम सुइसाइड करते हो, इससे आप सोच सकते हो उनकी मेंटल हेल्थ कितनी पुअर है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो मतलब आज के दिन में हो रहा है, हाउ वी कैन, सो इट इज नॉट ओनली फिजिकली ट्रेनिंग, बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट हम उनको मेंटल ट्रेनिंग दे के हाउ वी कैन कीप देम मेंटली स्ट्रांग along with physically fit. So with this I would say Jai Hind, and thanks. It is organized by a very big team. इतने लंबी चौड़ी टीम लेके ऑर्गेनाइज करना is not a joke, and I hope I have not taken too much of time so far as your time is concerned, and thanks for your patience listening, and I would like to take some questions and discussion now on these aspects of what you can say the topic which I have discussed with you about the mental health of an athlete, which was my main target to bring to the audience. Thank you so much once again so far as my part the topic is concerned. Thank you so much. Thank you very much, Jayashree ma'am. It was really a wonderful lecture, and hope we will get so much knowledge out of this session. Now, I request all the participants, if you have any question regarding today's session, you can ask directly to Jayashree ma'am. So you can unmute yourself and ask your question. If you have no question, you can share also your thoughts on this. Participants, if you want to ask your question, you can unmute yourself and ask directly to Jayashree ma'am. Okay, I think there is no question. There is no question. They have understood the concept. Yes. How to? No, there is a question: how to maintain children's mental health in this period? Yes, it is in chat box. Doctor, it's in the chat box. Dr. Suhas Vairat has asked how to maintain children's mental health in this period. And that is what just now, as I told you, that this is a period of uncertainty. And I feel apart from their regular activity which you are giving to children, my point, that is my feeling, is these children should be made aware of what is happening. Agar they are able to have something there, say for example, the children, you are telling them that they should not go out, they should not play with others, they should not move, but they should be justified why it is so, and if they have to, agar unko jana hai ya karna hai, usko kaise karna hai aur kya karna hai. And I feel बच्चों को भी अभी थोड़ा इंटरेस्ट, जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्या होता है, नेचर होता है चिल्ड्रन का कि रेस्टलेस होते हैं, बहुत रेस्टलेस होते हैं, उनके लिए एक जगह पे बिठा के रखना बड़ा मुश्किल होता है. सो इफ यू कैन गिव देम सम वर्क, जैसे जो चीज उनकी पसंद की हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अगर आप कुछ काम देते हैं जिसमें वो इतना मतलब व्हाट यू कैन से फॉर एग्जांपल, बट आई विल नॉट एडवाइज एनीबॉडी टू गिव देम ए मोबाइल टू प्ले, दैट विल बी द लास्ट थिंग मैं कहूंगी. लेकिन आप उनको ऐसे कुछ एक्टिविटी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी और कुछ मेंटल एक्टिविटी दे सकते हैं इन ए प्ले वे मेथड, जिसमें कि बच्चा एंगेज रहे.
the children can, and which can help him to on critical thinking or analysis or judgment, उस area में अगर help कर सकता है. Not that you, because nowadays बहुत easy हो गया कि बस बच्चा ये कर रहा है तो मोबाइल दे दो, but that mobile is a nuisance. According to me, it's a nuisance. If you can engage them in some sort of a, what you can say, mathematical game, some sort of activity to do at home, some sort of thing जो उसका passion होगा जिसमें, if you could engage them, that can help them, or take them somewhere or make them understand that how to develop upon sympathy, empathy, creativity. Numerous activity could be planned for a child, or things could be given कि अगर ये होगा तो कैसे करोगे, वो होगा तो. I think that can help the children's mental health more than anything else, is my feeling. And this is a question Sital has asked, how to manage stress in a progression. Is it progression stage? आप ये बात करना चाहते हैं डॉक्टर शीतल? Is it a progression stage? Dr. Sheetal, you can unmute yourself. Dr. Sheetal? I think if I understood Dr. Sital's question is how to in a progression manner, how to manage stress in teenage. That's what, how to manage stress in teenage. See, teenage का जो stress होता है, teenage stress are comparatively different than an adult this one. Teenage stress में there can be different kind of stress. एक तो teenage में stress होता है uncertainty. अनसर्टनिटी क्या होगा क्या नहीं होगा, एक टीनेज स्ट्रेस में ये होता है. दूसरा होता है टीनेज स्ट्रेस में आइडेंटिटी, उनका एक अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए उनका काफी सारे स्ट्रेस रहता है. सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो उनका ये आइडेंटिटी स्टेज है, और दे आर स्ट्रगलिंग टू कम आउट विथ समथिंग, बिकॉज मेनी टाइम द कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं कि अननोन रीजन ऑफ स्ट्रेस, लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द कॉज, किस कारण से ये स्ट्रेस हो रहा है. सो हियर देयर आर न्यूमरस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. सो क्योंकि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो मेरे लिए काम करेगा वो हो सकता है आपके लिए काम ना करे. सो एंड कुछ टीनेज होते हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस वो बहुत मीन्स दे गो ऑन थिंकिंग, बहुत सारे चीज सोचते रहते हैं, करते नहीं है लेकिन सोचते रहते हैं. कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट द सोर्स ऑफ स्ट्रेस. ये कौन सी सोर्स है, एंड बेस्ड ऑन दैट, से फॉर एग्जांपल वी नाउअडेज लॉट ऑफ पीपल दे एडवोकेट भाई योग करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो. इट इज ओके, दोज थिंग्स आर ओके, लेकिन वो योग करना या प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, पहला चीज है कि उनकी आइडेंटिफाई करना है व्हाट एग्जैक्टली. आइडेंटिफिकेशन इज वेरी एसेंशियल. द कॉजेस ऑफ स्ट्रेस हैज टू बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट. आफ्टर आइडेंटिफाई करने के बाद देन यू हैव टू, सपोज कभी कभी हो सकता है आप उनसे बात करके उनका स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है, कभी हो सकता है व्हेन दे नरेट अबाउट देमसेल्फ दे मे रिलीज देयर स्ट्रेस. So there can be numerous things which you can plan, but my feeling is first you have to identify ki what is it which is causing stress in them. Is it insecurity? Is it instability? Is it the reason, the cause? And based on that, you can think of a modality. But modality may not be same for everybody. I think there are another questions in chat box also. Dr. Suhas Bairaj, he's asking, children are getting more introverts due to this situation. What to do? Change this scenario. Which one? Which one? Suhas Bairaj, Dr. Suhas Bairaj. What is the, how to teenage children are getting more introverts due to this situation? What to do? Change in this scenario. I think it is not introverts, it is introvert. I think आपस में they are becoming inward. That is what I think. If I understand your question, you are telling that children are becoming more inward
due to the situation, what to do, change in the how to improve work intensity of students. Okay, there is Bhusan Ningoth who has asked about work intensity one. Okay, my feeling is, because like suppose now we are sitting in this media, right? We are not able to meet each other, but this media has been an excellent media to be connected with each other. So if you feel sometimes your children's classmates or friends and all those things, through this media they can get themselves engaged, or they can share their thoughts and feelings or their activities, that can be a way out. Because at this situation when we know these are the things happening, ये जो हो रहा है, तो जैसे ये मीडिया है, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग सपोज ए स्मॉल ग्रुप होता 5 से 10 लोगों का, अभी ये बहुत बड़ा ग्रुप है, 5 से 10 लोगों का स्मॉल ग्रुप सिमिलर मेंटालिटी का होता, तो अगर वही 5-10 लोग जैसे होता होगा, आप लोग घर में अपनी रिलेटिव्स वगैरह के साथ व्हाट्सएप में और कहीं कहीं कभी कभी बातें करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे ही स्मॉल ग्रुप में करके अगर बच्चों के क्लासमेट्स फ्रेंड्स उनका डिस्कशंस, इनका वेज, इफ इट कुड बी प्लान, आई फील दैट कैन हेल्प फॉर देम टू गेट कनेक्टेड रहने के लिए, that can very well help them to get connected with other children. And so far as work intensity, improve the work intensity of the students is concerned, अभी मेरे को तो लग रहा है चिल्ड्रन की वर्क इंटेंसिटी से टीचर्स की वर्क इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गया है ऑनलाइन में देन ऑफलाइन में. तो अभी ये जो वर्क इंटेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन लॉट अपॉन द टीचर्स, लेकिन वर्क इंटेंसिटी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि 24 घंटा वो ऑनलाइन में लगे रहे हैं. दैट इज व्हाट इज माय फीलिंग, कि आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो चुका है, जबकि कुछ चीजें ऑफलाइन भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऑफलाइन नहीं हो सकता. वर्क मैम. हाँ हेलो. हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए. ओके, गुड मॉर्निंग मैम. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मैम जो मोस्टली हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि जो इंटरेस्ट उनका होता है गेम में, हम उन्हें खेलने भी देते हैं, बट वो चीज को वो कंटिन्यूटी में क्यों नहीं कर पाते हैं. कोई भी वर्क को. वही तो मैंने कही ना, वही तो कही मैंने कि जो ड्रॉप आउट रेट है और जो मेंटेन करके रखना चाहिए, जो मोटिवेशन उनमें होना चाहिए, दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कीप देम मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू इनग्रेन, आप इनमें इस चीज को इनग्रेन कैसे करते हैं. जैसे कुछ बच्चे हैं वो अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड है, घर में थोड़ी सी सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, कुछ सपोर्ट मिलता है करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं दे गो ऑन डाइवर्टिंग, क्योंकि आज के दिन में हमारे इतने सारे डाइवर्सन, इतने सारे ये हो चुका है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ काउंसलिंग, कि उसको लगता है कि कोई जैसे बता देता है ये बढ़िया है, यहाँ कर देते हैं, वो कर देते हैं, सो दे आर डाइवर्टेड. आपको उनको डाइवर्सन से हटा के यू हैव टू ब्रिंग देम टू सिंगल माइंडेडनेस कि ये करना होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल. नहीं तो आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आपको उनको यू हैव टू ट्राई टू डेवलप द सिंगल माइंडेडनेस इन देम, कि जो अचीव करना चाहते हैं. आइडिया कभी कभी कुछ बच्चों ने अपने आप को ज्यादा एस्टिमेट करते हैं जो उनमें है नहीं, कुछ में है बट दे लोएस्ट. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, मेक देम, एंड इट्स अ वेरी हार्ड वर्क. इतनी आसान नहीं है टू कीप द पर्सन रिमेन जिसको कंसंट्रेटेड और मोटिवेटेड, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन इट्स नॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल. करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं. सो यू हैव टू रियली प्लान वेरियस टेक्निक्स कीपिंग इन माइंड अबाउट द टाइप ऑफ पर्सन ही और सी इज. उसका पर्सनालिटी, उसका ओवरऑल मेकअप बहुत काम करता है इसमें. थैंक यू मैम. Okay, anybody wants to ask the question? Anyhow, thank you very much for your patience hearing and nice meeting you all on this platform. काफी चेहरा तो मैं जानती हूँ, I am familiar with, बहुत लोगों से familiar हूँ, कुछ लोग थोड़ा नए लग रहे हैं, but thank you so much for having patience. लेकिन please take care,
and please take care of your children, friends, students. Definitely mental health, which is a very neglected thing, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए apart from physical health. Thank you so much. Okay, thank you very much, Thank ma'am. you so much. Thank you. Now, for the further proceeding, I would like to hand over the mic to Dr. Avinash Titarmare, sir. Dr. Avinash Titarmare, sir. Thank you very much, madam. Your nicely delivered speech by you. And now I am going to request it to the Vishakha madam. Now today second day of the first technical session chairman person, and I would like to request Vishakha madam for your for her chairmanship. Thank you, sir. Very nice lecture by you, ma'am. एक्चुअली हम लोग जब खेलते हैं तो फिजिकल स्ट्रेस या फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ के बारे में हम सोचते ही नहीं है, या फिर जिस तरीके से मेंटल हेल्थ को हमने बढ़ाना चाहिए इस तरीके से हम नहीं बढ़ाते हैं। और अभी जो कार्यकाल से हम जा रहे हैं, कोविड के कार्यकाल से, तो इसमें जिस तरीके की सब खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बंद है या जो भी सिचुएशन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो उनकी मेंटल जो उनका मेंटल अवेयरनेस है या उनकी जो मेंटल हेल्थ है ये काफी हद तक खतरे में आई है ऐसा हम लोगों को लगता है। और इस सिचुएशन में जिस तरीके की मेंटल हेल्थ हमने बरकरार कर रखना चाहिए एज अ खिलाड़ी करके, इस बारे में आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी को समझाया है कि क्योंकि हम सभी जो आज इसमें ज्वाइन हुए वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेयर को आज ट्रेन कर रहा है और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में भी जरा चिंताग्रस्त है। तो इस लेक्चर के द्वारा हम सभी को अपने अपने खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ अच्छे तरीके से संवारने के लिए या ये सिचुएशन में उनको और अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा नॉलेज हम लोगों को इस सेशन द्वारा मिला है। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू सो मच। So on behalf of the organizing committee of this international conference, I really very thankful to Dr. Jayashree Acharya ma'am for delivering such a wonderful lecture. So again, I am thank you very much to you, ma'am. Now we are moving to our next session, that is paper presentation. And for conducting the session, I would like to invite Dr. Surendra Tiwari sir to start this session. Dr. Surendra Tiwari sir. ठीक है। सुनील भोतमांगे सर कहाँ है ना? थैंक यू सर। और अभी इस पेपर प्रेजेंटेशन के सेशन में आज के इस पेपर प्रेजेंटेशन के सेशन में चेयरपर्सन हैं डॉक्टर सुनील भोतमांगे सर, एसोसिएट प्रोफेसर कोराडी कॉलेज, रायवाड़े कॉलेज। और जो लोग पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं मैं एक बार उनकी अटेंडेंस ले लेता हूं, सब उपस्थित हैं कि नहीं। सीक्वेंस वाइज पहले नंबर पे हैं डॉक्टर संजय डफाल, सेकंड नंबर पे हैं डॉक्टर संजय डफाल, आप हैं प्रेजेंट। डॉक्टर मीना बालपांडे,
डॉक्टर इंद्रपाल सिंह। यस सर। हाँ, मीना बालपांडे मैडम हैं। यस सर। डॉक्टर संजय डफाल सर। डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर इंद्रपाल सिंह। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। कैशम सत्यराजन। पी अश्विनी। यस सर। है मैडम। ठीक है। डॉक्टर कुलदीप गोंड। डॉक्टर कुलदीप गोंड सर, आप उपस्थित हैं? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह। डॉक्टर प्रशांत गावंडे सर। यस सर, यस सर। सर हैं। कल मिले थे ना सर अपन, हम लोग? हाँ, कहाँ पर सर? हाँ, हेलो, कहाँ पर मिले थे? अमरावती ना, अमरावती। हाँ, यस सर, यस सर। यस, मिले। तिवारी सर बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सुगनेश चुरासामा। डॉक्टर सुगनेश चुरासामा। यस सर, प्रेजेंट। सर एक्चुअली वो आदित्य दहिवेलकर होगा, तो वो मेरा को ऑथर है। मैं ऑरिन रक्षित हूँ, तो हम प्रेजेंट है, हम लोग प्रेजेंट है ना? ठीक है सर। ऑरिन रक्षित। क्या नाम है सर? ऑरिन रक्षित। अच्छा, ऑरिन। ऑरिन रक्षित। ऑरिन रक्षित। नहीं सर, ऐकलं तर सर, गरम होते का मोबाईल थोडा? मीनाक्षी पाहुजा। मीनाक्षी पाहुजा। यस सर, आई एम प्रेजेंट। प्रेजेंट। यस। जय कुमार शिवसागर सर, आपका आवाज आया था अभी। हेलो, जय कुमार शिवसागर सर। डॉक्टर संजय मेश्राम। हो रहा है यार। हाँ, डॉक्टर संजय मेश्राम। डॉक्टर अजय सिंह। डॉक्टर विशाल शिंदे। डॉक्टर गौतम जाधव। यस सर। डॉक्टर डॉक्टर शीतल शेंडेकर। Dr. Sheetal ma'am, please unmute yourself. Are you there? Because in participant list you are visible to us. Dr. Sheetal Shenkar ma'am. डॉक्टर अमृता पांडे। Sir, actually Amruta is not here. I am she is my co-author. Myself Saket Kanetkar sir, I am there. ये है ना, लीजिए। Hello sir, did you get? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रंजीत पाटिल सर। डॉक्टर रंजीत। हेलो सर। हाँ, है ना? सर, यू कैन हियर मी? Yes, yes, you are audible sir. सर, मुझे 5 मिनट सर, मुझे आप 5 मिनट दे सकते हो सर? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद मैं प्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू सर।
डॉक्टर सुगनेश चुड़ासमा सर. Hello. Hello. Dr. Sugnesh Chudasama. मीना बालपांडे मैडम. हेलो. हेलो हाँ मैडम. शीतल शेणकर. अच्छा शीतल शेणकर. ठीक है ना, ठीक है मैडम, ठीक है, प्रेजेंट है ना, ठीक है. डॉक्टर मीना बालपांडे मैडम. हाँ यस सर. हाँ. May I audible? Yes, yes, you are audible, ma'am. You can start your presentation. Yes. Sir, I मी स्क्रीन शेअर करते सर. Get on the phone, sir. Start video. Share screen. Good morning, all dignitaries and resource persons and my colleague and friends. International Multidisciplinary Conference on Contemporary Approaches and Application in Physical Education and Sports Sciences, 26 and 27 March 2021. My subject is Impact of COVID-19 on Global Sports. Myself, Dr. Meena Balpande, Head Department of Physical Education, Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya, Jaripatka, Nagpur. Introduction. COVID-19 is not merely serious public health concern, rather this trigger disaster, socio-economic and political crisis in the infected country. The first modern COVID-19 pandemic was reported in December 2019 in Wuhan, Hubei province, China, and most initial cases were related to source infection from a seafood wholesale market. Since then, the disease rapidly circulated the globe and has eventually affected every continent except Antarctica. It has been categorized as a pandemic by the World Health Organization. International Committee on Taxonomy of Virus, ICTV, named the virus as SARS, acute respiratory syndrome, coronavirus 2, SARS-CoV-2, according to WHO. In 2002-2003, more than 800 people suffered and 774 died for coronavirus called SARS. In 2012, March COVID pandemic broke out, infecting more than 2,494 persons and killing over 858 lives worldwide. Coronaviruses belong to a large, diverse family of viruses. These worldwide outbreaks triggers a large number of facility mobilities and cause billions of greater human suffering than other contagious diseases in whole world. In addition, other global environmental changes such as soil degradation, ozone layer depletion, pollution, and urbanization, changing environment creates an disputable threat to our planet and human health. Global warming
has its root in industrial development with the huge release of coal during the Industrial Revolution. Objectives. The COVID-19 pandemic is considered as the most crucial global health calamity of the century and the greatest challenges that the humankind is faced according to the report of the World Health Organization. The current outbreak of COVID-19 has affected more people and killed more than 26 lakh people from 200 countries throughout the world. From the month of January, there is report of clinically approved antiviral drugs and vaccines that are effective against COVID-19. It has rapidly spread around the world, the entire human population. This paper describes the impact of COVID-19 on sport in related to social development and physical activity. Subject and methods. The global outbreak of COVID-19 has resulted in closures of gym, stadium, pool, dance and fitness, stadium, physiotherapy centers, parks and playground. Many individuals are therefore not able to actively participate in their regular individual or group sporting or physical activities outside their homes. Under such condition, many train, weight gain and loss of physical fitness, low-income families are especially... Ma'am, sorry to interrupt you. Just come to the page for the findings and conclusion. Yes, sir. शेवटी करून दे. बस. Conclusion and recommendation. The impact of COVID-19 on physical activity and well-being. Supporting physical activity. Government should work collaboratively with health and care services, schools and civil services organization representing various special groups of support physical activity at home, enhancing access to an online resources to facilitate sports activities where available should be a key goal in order to maintain social distancing. However, low-tech and no-tech solution must also be sought for those who currently lack access to this internet, creating a flexible but consistent daily routine, including physical exercise every day to help with stress and restlessness in advising. Hello, madam. Research and policy guidance. Hello, madam. बस ठीक है ना, ठीक है. और अगर किसी क्वेश्चन पूछना होगा, थैंक यू वेरी मच. हेलो, किसी को क्वेश्चन पूछना होगा तो चलिए, ठीक है ना मैडम. थैंक यू मैडम. थैंक यू वेरी मच सर. नेक्स्ट पी अश्विनी मैडम. Sir, sorry, I just got disconnected. Can you give me 2 minutes, sir? Yes.
नेक्स्ट गावंडे सर। उनका आवाज सर है ना? रेडी रहिए। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ sir, want to share my screen. Am I audible, sir? Yes, you are audible, sir. Okay. Wait, the screen is screen sharing. Good afternoon to one and all. Chairperson of this session, Honorable Dr. Sunil Bhotmange sir. Co-chairperson of this session, Honorable Dr. Surendra Tiwari sir. Our most valuable friend, teacher, coach, Honorable Principal, Dr. Vijay Datarkar sir. Also today's guest of honor, our friends, Dr. Sanjay Chaudhary, Organizing Secretary, Dr. Prashant Khalatkar sir, Dr. Devendra Wankade, Organizing Secretary, and Manishwar Thakre, and all our friends and participants present over here. Today, our topic of presentation is Introduction of Tactical Attacking Spin in Kho-Kho, that is dummy third chase. In this presentation, my co-author is Dr. Ajay Bonde from Yatmal, Buriarab. Biodata is, I'm going forward. Little information about the game is given. About information about Kho-Kho court is given over here. Attacking and defensive skill in Kho-Kho, basic skills are given over here. Advanced Kho-Kho skills are given over here, where dummy third page is there. Tactics and strategy, about tactics and strategy information is given as the topic is dummy third chase, which is tactical skill. And I'm talking about dummy third chase. Prior to that, I would like to tell information about third chase because it is the need to know the third chase. What is third chase in Kho-Kho? Attack in this skill, attacker's main target to put out defender in between pole and first seated chaser. Attacker sitting on third and fifth square, receiving Kho, runs speedily without dropping Kho on second chaser, goes directly towards defender who is heading towards pole. Defender tries to enter opposite side in between pole and first seated chaser, where attacker stretches his hand as much as possible and tries to touch the defender to put him out, following all the rules of Kho-Kho. Attacker third square से उठ के पोल की तरफ जाता है और बीच पोल और फर्स्ट सीटेड चेजर के बीच में हाथ स्ट्रेच करके डिफेंडर को आउट करने की प्रयास करता है, उसी को थर्ड चेज बोलते हैं. अटैकर मस्ट ट्राई नॉट टू फॉल डाउन ऑन पोल ड्यू टू हिज स्पीड एंड हिज एक्स्ट्रा स्ट्रेच. अटैकर शुड टेक केयर फॉर नॉट क्रॉसिंग और टचिंग द सेंट्रल लेन और लाइन. इन दिस स्किल अटैकर मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. स्किल यूज करने के लिए अटैकर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए. अभी मैं आपको थर्ड चेज के बारे में, थर्ड चेज डिफेंडर इसमें जो एंट्री करता है उसके बारे में बताऊंगा. डिफेंडर इस थर्ड चेज के वजह से यू शेप एंट्री लेता है और एल शेप एंट्री लेता है. यू शेप एंट्री में व्हेन अटैकर अप्लाइज थर्ड चेज, डिफेंडर यूजेस दिस एंट्री. इन दिस सिचुएशन डिफेंडर इज वेरी कंफर्टेबल. यहाँ पर कंफर्टेबल होता है यू शेप में एंट्री लेने के लिए. स्ट्रॉन्ग डिफेंडर कैन इजीली अप्लाई दिस एंट्री एंड इफ द डिस्टेंस इन बिटवीन डिफेंडर एंड अटैकर इज मोर देन डिफेंडर यूज इट. अटैकर का और डिफेंडर का डिस्टेंस अगर ज्यादा रहता है तो यू शेप की एंट्री वहां पर करता है. वैसे एल शेप में जब अटैकर थोड़ा स्पीडीली अटैक करता है और थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करता है और डिफेंडर को आउट करने का प्रयास करता है, उस टाइम पर डिफेंडर थोड़ा अंदर की ओर एल शेप में निकलता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है. उसको एल शेप एंट्री बोलते हैं. और तीसरी जो एंट्री रहती है डिफेंडर की फोर्स एंट्री रहती है, जो कि अटैकर बहुत ही स्पीडीली अटैक करता है और वहां पर डिफेंडर को डर रहता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, तो फोर्सफुली एंट्री लेने का प्रयास करता है फर्स्ट सीटेड चेजर और पोल के बीच में से और पोर्ट लाइन की तरफ
वो उसका एंगल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पुल टर्निंग के बाद उसके आउट होने के आसार बढ़ जाते हैं। यही थर्ड चेज में होता है। अभी मैं आपको जो स्किल जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं हुई है, मैं पहली बार इस स्किल की चर्चा यहाँ पे करने जा रहा हूँ। डमी थर्ड चेज, ये टैक्टिकल स्किल है, इसमें टैक्टिक्स का उपयोग किया जाता है। जैसा इन दिस टैक्टिकल स्किल मेन टारगेट इज टू पुट आउट डिफेंडर आफ्टर पोल टर्निंग इंटेंशनली। अटैकर इंटेंशनली पोल टर्निंग करता है और उसके बाद उसको मारने का प्रयास करता है, जबकि वो फर्स्ट सीटेड चेजर और पोल के बीच में उसको आउट ना करते हुए आगे जाता है। इसलिए वो इसलिए करता है कि वहां पर फाउल ना हो जाए, क्योंकि वहां पर सेंट्रल लाइन है और पोल है, पोल पर भी वो स्पीड की वजह से गिर सकता है, वो गिरना नहीं चाहिए, इसलिए वो अटैक करता है और पोल टर्निंग के बाद उसको आउट करने का प्रयास करता है। In order to avoid foul, saving time due to falling on pole or imbalance, this attack is made. In this attack, attacker pretend to stretch his hand. इसमें क्या होता है कि अटैकर पूरा हाथ स्ट्रेच नहीं करता है, थोड़ा प्रिटेंड करता है, बताता है कि मैं हाथ स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन हाथ स्ट्रेच न करते हुए थोड़ा हाथ कम स्ट्रेच करते हुए पोल की तरफ भागता है और अच्छी तरह से पोल टर्निंग लेने के लिए हाथ कम स्ट्रेच करके आगे जाता है, पोल टर्निंग लेता है और डिफेंडर को आउट करने का प्रयास करता है। Due to attacker speed and seeing stretching hand of attacker, defender pushes himself opposite side with wrong entry, fumble and his angle of entry changes. Defender forced to go in a ring game should take L-shape in or should take L-shape entry, which gives chance to attacker to put him out. Sorry to interrupt you, Dr. Prashant sir. Okay, बताइए. Because we are having time limit. Okay, yes. So directly come to the conclusion okay. and recommendations. Okay, conclusion. Conclusion on the basis of result and on the basis of result and increasing on the basis of result and vast experiences of the coach and vast experience of ours, this skill which is not today written in the books or you will never find it in the literature, to see proper result, the experimenter practically 3-month practice matches conducted to got the result. After the study, it was found that the tactical skill DTC, dummy third stage, is very useful skill. With this, I conclude my presentation. I am thankful to organizers to give me an opportunity to present paper. Congratulations for good organization of this conference. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. हेलो, किसी को क्वेश्चन पूछना है? Is there any question from Ashwini? Next. Ashwini. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. One second. Ma'am, are you ready or would you like to take some time? Sir, actually, I'm trying with my mobile. How can I share with mobile, sir? Just tap on share screen option. Yes, sir. First of all, open your presentation. Okay, 1 second, sir. Yeah. Ma'am, if you face any difficulty for presentation, you can send your presentation on my WhatsApp. I'll share it from here. I'll take next 2 minutes, sir. Next participant can
present their presentations, and after that I will do it, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, sir. Alvin. प्रेजेंट है यहाँ डॉक्टर सुगनेश चूड़ासामा। Hello. नेक्स्ट औरीन Hello. रक्षित। Sir, this Yes, is Dr. sir. Sugnesh Ulasama, sir. सुगनेश Sir, can you please play my PPT? वरी घेऊन ये ना मस्त चालू आहे ते चार्जिंग वरी करला आपल्या इकडे यायचं का हां Hello. अर्ध्या घंटात घरी घर पाहिलं हां ठीक आहे काय चाललं चांगलं पाठ पाहिजे म्हणून आता काय करतो तो डायरेक्ट द्या म्हणते ऍडव्हान्स पाच काही पैसेच देऊ साहेब ह्या ते असा अडेल तट्टूच माणूस आहे पण नाही का पागल 5,000 बोलण्याचा वगैरे काहीच तरीका नाही त्याला. 20,000 म्हणे का नाही म्हटलं आता 5 देऊन पण ऍडमिशन वगैरे काही तो अजून जायचाच आहे तो अजून यायचाच आहे काही अर्थ आहे का त्याला देऊ पैसे ना हा विक्की तर म्हणे त्याला खूप जास्त देऊ नका म्हणे त्याला माहित आहे आता यायचं अडलं म्हणून करत असेल का तो काही एक वेळ काय म्हणतात सांगा देऊन देतो होते आता केलं ते पुढे नाही द्यायचं आता येऊ नको म्हण Thank you, sir. Hello. Very good afternoon to all. Honorable. Hello. Am I audible, sir? Yes, you are audible, sir. Yes. Thank you, sir. Honorable Chairperson, sir, co-chairperson, sir, guest of honor, sir, organizing committee, and all the participants. This is Dr. Sugnesh Ulasama from Gujarat National Law University, Gandhinagar. So my title is Yoga for Obesity. So I'll not take much time. Before starting, sir, next slide, please. People without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Like, we all are running behind the success. These days, we all are running behind the success. And in this running, we have forgotten something, and that is our health. We are not giving enough time to our health. And that is why we are suffering from so many problems. So next slide. So I'm not going to I'm not going to discuss about anything from where yoga comes from. We all know, not even the Indians, the world knows that yoga has been introduced by Indian rishis. So I'm not going to tell about this thing. Next slide. Next again. आणि 200-400 रुपये देऊन द्यायचे. Okay. So why the world is running behind the yoga? Not only myself, not only I'm not telling about anyone else. The world is running behind the yoga. Why? We all know the benefits that it improves our flexibility, build our muscle strength, perfect our posture. We all knows about this, but why? त्यावर नाही ह्या पैसे घेऊन त्याचे That सरस्वती नाही द्यायची नाही सरस्वती नाही excuse me.
as I earlier told, that we all are running behind this success. And in this success, we have forgotten something, that we are behind the modern society. So next slides. Earlier we used chakki chalan, means chakki, there's the floor mill, and now these days we have electric floor mill. That is why we all are suffering. We all are suffering overfat on our stomach. So that is why this exercise has been included in yoga activity, and that is called chakki chalan. Next slide. Earlier we used this pedal to row from river. Now we have electric boat, and this, that is why we are suffering so many fat over the stomach. And the same exercise, Nauka Sanchalana, is included in the yoga. Next, earlier we used to clean our house by sitting like sitting and brooming our home. Now we have electric broom. That is why the same exercise is included in yoga. Some next slide. The farmer was using chop cutter. Now we have electric chop cutter. The same washerman was washing the clothes. Now we have electronic equipments. That is why the same activity, Dhokni Kriya, cutting the woods, all the activities have been included in the yoga. Next slide. Earlier we used to punish all the students. Now punishment is also a criminal offense. So we all are not doing this. That is why students also are also suffering from so many things. So these are we have left, and that is why we all are suffering so many things. So these were the this introduction that why we are running behind the yoga. But I'm going to tell you something about something other than this, and that is obesity. These days we all are running here and there, and that is why we all are suffering from overfat. Overfat and overweight, both are different things. Overfat, we all are suffering from overfat, which is surrounding our stomach. So next slide. So next, the WHO has recommended that body weight based on BMI values for the adults, and it is used for both men and women. So this is the classification that if we are less than 16 or 16 to 7, that everything has been mentioned by WHO. So next slide. But what I did it, I have selected 2%. One was teacher, near about 120 kg and suffering from so many. So next slide. So many overfat and suffering from this obesity. Then a housewife who was suffering from overweight and was suffering from this obesity. So I gave them some only few exercises. Sukshma Vyayam. Sir, next slide. Sukshma Vyayam, Surya Namaskar, twisting exercise, Dhyana and Savasana. The program was selected after the discussion with them, and I gave them a mantra, and that mantra was enjoy your food. Ati sarvatra varjayat. Do not excess, uh, beyond our limit. Advise them to avoid junk food during the holidays. 5 days in a week, I told them to do these exercises. Sir, next slide. So this was the start for the teacher. He was given stretching exercises, yogic exercising with some weight. Then pranayama, kapalbhati, and shavasana. And this was their training program. First 4 weeks, second 4 weeks, and last 4 weeks. The same thing, the same chart prepared for the subject 2, that is housewife. Savasana, yogic exercise, Surya Namaskar, asana, pranayam, kapalbhati, dhyana, and shavasana. And this was the chart for her. So after completion of their 12-week program, the first person was his weight was 120 kg, and after this program his weight was 104 kg. So next प्रिंटर नाही करते आलं हो ते त्या कमिटीवर आहो की नाही मी त्या ऑर्गनायझिंग कमिटीवर. Sir, next slide.
Yes. No, the next. This. So the first person was his weight was 120 kg. And after a 12-week program, his weight was 104, and the woman was 80 kg. And after the 12-month program, her weight was 71. The person was means the teacher. The teacher's BMI was 44.1, and after this program, his BMI was 38.9. The ladies was means the ladies the female BMI was 31.6, and after the program was 28.4. Sir, next slide. The conclusion is, in this era we all are running here and there to get success, and in this success we have forgotten something, that is our health. We are not giving enough time. We all knows that, and even though we are doing this, and that is why we are suffering a major problem, that is obesity. So the yoga can reduce the obesity, and it's a fact. Now I'm going to sir, last slide please. Last, after thank you. These are the person, Miss Sujata Malik, as Associate Professor of Law, and Dr. Hardik Parikh, Assistant Professor of Law at Gujarat National Law University. See the difference of both of them. Thank you, sir. Is there any question? Hello? किसी को क्वेश्चन? Next is Arun Rakshit. Thank you, sir. Thanks a Yes, lot. sir. Yes, sir. Thank you. Next, Arun Rakshit. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So is it visible, the screen? Yes, it is visible. Okay. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to convey my deep respect and regards to the organizing committee for letting us present our paper. Myself, Audin Rakshit, I'm the author of this research paper, and I'm being assisted and co-authored by two of my fellow college mates, Sejal Anand and Aditya Daivelkar, and both of them are not present here for some personal urgency, so I'll be presenting the whole paper today. The topic is named as Crickonomics, so it's basically cricket along with economics, and it is a study on the relationship between the nation's economy and performance in international cricket. The aim of the research paper is to identify whether economic activity has any relationship with the nation's performance in international cricket, and in that case, we have regarded GDP per capita as the economic metrics, and the metric for performance in international cricket has been the ICC ODI ranking, which is published by the International Cricket Council. We assume that with increasing GDP per capita, a country will win more matches, that will make it gain more points in the ICC ranking and will have a higher rank. The limitations of the paper is that the research is limited to a time frame of 2002 to 2019. 2002 was the year when the ODI championship was first held by the ICC. The research data is secondary in nature and is collected from published journals and websites. The data is limited to the 12 full ODI members of the international cricket, and the points of the respective teams are on the basis of ODI matches played. Methodology. So we will be using the simple linear regression model where ICC ranking has been selected as a dependent variable and economic performance, that is GDP per capita, has been regarded as the independent variable. So you can see the formula is Rn equals to B0 plus B1 times GDP N plus E. So Rn is the rank of the nation N as per ICC, B0 is in intercept, B1 is the slope coefficient, and GDPN is the GDP per capita of nation N at current US dollars 2019. This data is provided by the World Bank, and E is the error. In this research paper, we have selected an upper limit of the P value of 0.05. So on the basis of that, we will go to the findings and observation. So as you can see that India and Bangladesh are the two countries of the sample that
has actually proved the hypothesis with a positive influence, that is, with increasing GDP per capita. These two nations actually play well, win more matches, and gain more points. Most of the countries, which are Australia, New Zealand, England, Ireland, South Africa, Pakistan, and Sri Lanka, they have defied the hypothesis, and the reason being that there has been an insignificant relationship between the variables. As you can see that for Australia, the p-value is 0.1511. For New Zealand, it is 0.7750. All of them are more than 0.05. However, Afghanistan, Zimbabwe, and West Indies, these two countries, although have a p-value less than 0.05, but then again, they have uh, defied the hypothesis. The reason being that they have a negative influence on GDP per capita on ranking. Coming to conclusion and discussion, it can be observed that the developed economies like Australia, New Zealand, Ireland, England, and South Africa has no significant relationship between the respective GDP per capita and ranking. One of the factors which we found that it could be because of the well-developed state-of-art infrastructure which has been there for long, and the excellent grassroots development programs that these countries have adopted to build cricketers and train better. Coming to the undeveloped economies of Zimbabwe and Afghanistan, they tend to lose more matches as GDP per capita increase. One of the reasons being that cricket, since it's not a necessity like daily activities or military spending, so the government tend to spend less on sports. So this might be one factor that have caused the negative influence of GDP per capita on winning more matches by these countries. Bangladesh and India being the two countries that have actually proved the hypothesis. In recent years, they have shown tremendous improvement, especially Bangladesh, due to the improvement in the development of cricket infrastructure and spending high money on the game by the government. And it can be very well seen from 2008 when India has initiated the IPL, and now Bangladesh Premier League is also being organized by the Bangladesh Cricket Board. One unique aspect of this research is that although West Indies have a GDP per capita between 10,000 to 20,000 US dollars, the nation has showed a decrease in performance in recent years. One factor which I could cite is that in 2013-14, when West Indies came to India to play the limited over cricket, they actually went for a toss in Dharamshala and they didn't play the game because Hello. there was. Yes, sir. प्लीज हाँ stop. क्वेश्चन आंसर किसी को पूछना है कुछ? Hello. No. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Madam P. Ashwini. Hello. Hello, sir. I'm ready, sir. Now I can present my Yes. paper. Just I'm joining. Share. Sir, I'm sharing my screen. Good afternoon, one and all. Myself, I'm P. Ashwini, working as a. Can you hear me, sir? Hello. Yes, ma'am. You are audible. Yeah. Good afternoon, everyone. Myself, I'm P. Ashwini, working as a physical director in Government College for Men, Kurnool, Andhra Pradesh. From yesterday, we heard about different type of papers by eminent experts in their field of expertization. When we come to athletes, male and female athletes, when they practice and when they perform, they undergo some physical and psychological changes. Especially when we come to female athletes, the female athletes at the age of 12 to 14, the menstruation will happen.
So when they get this menstruation, they have that most of Indian have myth that they cannot perform during this menstruation period. So due to that, I started this survey. When I'm going to start this survey, I searched in Google Scholar, everywhere. I searched in internet, but there were very few papers and few people are interested towards this, and few people know this is a barricade for a female. When we go deep into this, a female athlete, when she gets when menstruation happens at 12 to 14 years at the first time, later it continues for as a cycle of 28 days. In each cycle, again we divide into 3 phases, like follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. And when we come to menstruation, this menstruation phase, this will come in this follicular phase up to 5 to 6 days. So when we deep dive into this, during this menstruation phase, they have their hormonal changes. Like when the estrogen levels and progesterone level, first 13 days their estrogen level will be more, and after that the estrogen will come down. That's why before going to know what why estrogen increase, when estrogen increase, what will happen to our body? When estrogen increase, our body will muscular glycogen will increase, and like that some advantages are there with these hormones. But when one hormone is increasing, another hormone is decreasing, and these all affect in positive and negative way on athlete performance and practice sessions. So to do this survey, this paper, I have chosen only female athletes who are above 16 years and below 27 years, because that more than that age they cannot perform well. They go into again different phase. So I used Google survey method by using Google form, and I used open end and close end, some close end questionnaire. Here is 22 questions that I've given them, and this is my survey link. If you possible, you can click this and you will get the questionnaire. This is very interesting questionnaire. And when we come to what happens when I asked our students or some other players about their menstruation details, their performance, they are actually they're not willing to tell their information about their menstruation. So when I conducted this survey 2 months back in all over India, there are only few responded. Like I given questionnaire to with my different sources, my NIS people and my physical education people, and some of different social media platform. I shared with them, but there is a very less amount of people are willing to give their information. Here is that out of 100, 9% are willing to give, they share their responses about their menstruation, and 91% they are not willing to. When, as I told, active athletes, due to pandemic, there is a disturbance in practice for many athletes. So I have considered only active athletes. In that, I have district level 14% students responded all over India, and this survey is conducted throughout the India, and in that almost more than 25 games and sports people, like athletics, swimming, badminton, powerlifting, pistol shooting, and some more athletes, basketball, hockey, like that. So many people, they responded their level best.
And as they are only active athlete, I considered it. That's why I got only in 2 months 125 responses as on today. But when I prepared this paper on 19th, it was a 124 responses. So according to that, the state level participants are 24 and the national participants are 59%. They are practicing during this pandemic, and they are still in active athletics, and only 3% people are international. And when we come to this, female who are practicing regularly, in that one of the questionnaire is that is there have any menstruation problems or regular, irregular, and their symptoms. Then in that, most of the people told that who are practicing regularly, they are not having any menstrual. In that also, only 13% people have their menstruation symptoms like stomach bloating, heavy bleeding, and legs cramping, those all things. And these are the percentage who are practicing during this menstruation period. Actually, when I asked some people, as athlete, I used to practice. But when we come to physical education, and when we come to degree college, and my students, when I ask to practice them, because there are some people start practicing in intermediate, some are degree. But when we come to college level, we should make everybody to be in the field. So when we ask them to practice, they used to tell that my mother said I have to take rest for 5 days, I have to take rest for 3 days. Some people, like, they used to tell and they did not even responded. They will not come to practice session also. So as I am there, I'm motivating Okay, them, but other thank you people. very much, Ashwini ma'am. 2 more minutes, sir. We are having Yeah, 2 more minutes, sir. So during this the main thing is here, when we see this here, their performance during menstruation, how their performance, most of the people think that they cannot perform and they will not perform, and their performance will decrease. When we see here the decrease in performance is 31% compared to, and there is no change in performance, and increased performance is there. When we add these two, this is very less amount. So what we should do is, we need to motivate our students, our younger generation, and the people who are already practicing national level also. They have that they cannot perform. If they perform on those 2 days, when we come to international level, most of the people, you are aware or not, I don't know, they will use contraceptive pills to avoid their menstruation during their competition. So those all things will happen. When I read one study about these performance increase during menstruation, in the paper was survey and conducted in United Kingdom. They 8 international elite athletes, they told that instead of using pills, the normal menstruation they practiced well and they performed well. And when in competition also, they won their some championship. So this is the thing, we in India, we need to motivate. In India, mostly when we come to talk about women menstruation, people are fear to talk about it, and they will think that this is not my subject, or I'm a male or a female, how can I. So these all we should clean up with the student, and I recommend further study can be done in experimental method, and by using different menstrual cycles, and with a large large sample. Thank you, sir. Okay, thank you very much, ma'am. Yes, sir. Participants, if you want to ask any question regarding this presentation, you can unmute yourself. Hello. Sir, please. First, I would like to congratulate you and appreciate your effort
It is really you take a very courageous step to take such kind of topic for your study. My question is about only one thing. In the last you said key your recommendation for the experimental study. What kind Yes, of sir. experimental study can be taken up for this kind of topic? Thank you, sir. Actually, I want to talk about this due to short time. I could conclude like that. So when I told us beginning, there are 3 phases. In 3 phases, how the performance is different. People think that 100% there is a decrease in performance. There are so many articles that their hormone levels down. That's why their performance, and then psychological fear that makes them come down. Their performance will decrease. So here we have to take 3 phases their performance, and when we take an athlete there are strength levels, because performance is always if we go to different game, then their motor qualities, which type of qualities you want to measure, you can measure their qualities, and psychological and physiological variables we can use, and we can evaluate their performance. Is it really decreasing performance in India especially, or till now there is no study in India as per my knowledge. So if further study can be conducted, like their performance can be calculated during their menstruation phase. Most of the athletes, they will not agree, but we should make them agree, and we should take performance at that time. We should motivate them, as we are giving physical literacy and all nowadays. So this is encouraging women towards that myth that they cannot perform. We should take out that, and we should make them practice, and they should open to talk about it, and we should educate them, sir. Thank Did you. you got my Yes, point, thank sir? you, thank Yeah. you. Yes, any more? अभी इस सेशन के चेयरमैन डॉक्टर सुनील भोतमांगे सर, ये जो पेपर प्रेजेंटेशन हुए इस पे अपने रिमार्क्स देंगे। डॉक्टर सुनील भोतमांगे। हेलो हेलो, थैंक यू तिवारी सर। आज के इस सेशन में जो पेपर रीडिंग हुआ इसमें डॉक्टर मीना बालपांडे उन्होंने जो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल स्पोर्ट जो बताया, वो जो आज की नीड है, आज की सिचुएशन है, उस पर अच्छा एक्सप्लेन किया। कॉलेज हाँ हेलो, हाँ, नेक्स्ट जो प्रशांत कावंडे सर है, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्टिकल एक्टिविटी इन स्किल इन खो-खो, जिसमें पोल टर्निंग एंड डमी चेसिंग, इसके बारे में जो बताया, जो लोग काफी लोगों को पता नहीं है ये जो स्किल है, और आपने जो खो-खो के बारे में जो बताया है, इसमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। कांग्रेचुलेशन सर। नेक्स्ट डॉक्टर सुबेश, उन्होंने जो योगा ओबेसिटी पे जो बताया, जिसमें पुराने दिनों में जो आप बैठ के आप क्लीनिंग फ्लोर क्लीन करते थे, और आज की इसी वजह से ओबेसिटी का डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है एरविन रक्षित सर, उन्होंने जो स्टडी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये तो वास्ट टॉपिक है, और पूरे सभी लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, बट सर ने जो डाला इसको बताया इसके बारे में
बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट पी अश्विनी मैम, जिन्होंने ये सर्वे ऑफ इफेक्ट ऑफ मेजरबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अमंग इंडियन एथलीट। पहले प्रवीण सर ने तो आपको कांग्रेचुलेट किया ही है मैम, but then also we also all congratulate you for the taking such a topic on an international platform and explaining it a lot. Congratulations, ma'am, and I thanks a lot to the organizing committee for giving me the opportunity for chairing the session. Thank you, sir. I Tiwari sir to take the further. Thank you very much. Thank you, sir. Good afternoon, all of you. ठीक है। अभी नेक्स्ट सेशन शुरू होगा तुरंत और उसका संचालन करेंगे डॉक्टर प्रवीण पाटिल सर। थैंक यू। और चेयरपर्सन रहेंगे डॉक्टर अश्विनी चंदेल सर। थैंक यू तिवारी सर। आज इस द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आज हमारे बीच चेयरपर्सन के रूप में उपस्थित है डॉक्टर अश्विन चंदेल सर, प्रिंसिपल शिव प्रसाद सदानंद जायसवाल कॉलेज, अर्जुनी मोड़, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। वर्क as a director student welfare, RTV Nagpur University, in intercollegiate, inter-university, state and national basketball, handball, badminton, hockey, cricket and athletics. As a chairman member last 30 years, university basketball selection team, secretary, Chandrapur District Basketball Association, coach, Sanmitra Krida Mandal, Brahmapuri, coach, manager, university basketball man and women team. Hello. 30 years. Executive member, Maharashtra Basketball Association, awarded best NSS program officer 2 times. Worked as a NSS program officer and district coordinator 1993 to 2007. Near about 80 to 90 research papers submitted in physical education. Awarded Lokmat Tridakshak Purti Award, outstanding performance in sports, Gondia district. Conducted as a organizer various state, national, inter-college level tournament at Arjuni, Brahmapuri. Dr. Ashwin Chandal sir, chairperson. Chandel sir, please unmute yourself. Chandel sir. माइक कनेक्टेड नहीं है सर, शायद आपका माइक कनेक्टेड कीजिए। पेपर प्रेजेंटेशन केशिम सत्यनारायण प्रेजेंट है। Yes, sir. Present, sir. ओके स्टार्ट कीजिए सर। Yeah. One second, sir. Let me take out my slide. नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर है मैडम, आप तैयार रहिए। मीनाक्षी पहुजा। Yes, sir, I'm ready.
Chandel sir. Yes, sir. Chandel Sir, sir. Sir, please call someone ahead so that I can find out my presentation paper. चंदन सर आप प्रेजेंट हो चंदन सर Yes, sure, I will. चंदन सर आप प्रेजेंट हो चंदन सर Please wait, sir. 1 minute, 1 minute. सत्यराजन सर रेडी हो आप Sir, I'm searching my presentation. Sir, Praveen ओके sir, सर चंदन सर ओके आया आवाज? आया यस सर Thank you, thank you. Hi, Praveen sir. Sir, this is Ranjan. Okay. Praveen sir, किती जायचे? Sir, this is Ranjan speaking. काय काय याच्यामध्ये बोल ना. सत्यराजन सर आर यू ओके Sir, I couldn't find my PowerPoint on my phone. That's why please call up someone ahead of me so that I can find out. ओके सर नेक्स्ट ले लेते हैं उसके बाद कर लीजिए सर आप हाँ जी मीनाक्षी आहूजा मैम आर यू ओके Hello. जी मैम Yes, sir. मैम आप कीजिए पेपर प्रेजेंट कीजिए मीनाक्षी आहूजा मैम Oh, you want me to present first? Actually, I started driving. Oh, okay, no problem. I'll just park my car. ओके One second. Hello. 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 Hello, sir. Hello, sir. Yes, you are audible, ma'am. It's Sital Center. Sir, I'm ready. Yes, sir. I'm ready with my presentation. Okay, you can start your presentation. Okay, sir. Sir, PPT visible हो रहा है? Yes, ma'am, it is visible. Okay. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Effect of on Kabaddi women players in Maharashtra, presented by Sheetal Shenkar. At the introduction of this title, purpose of this study was to examine an effect of static stretching on Kabaddi women players. 20 Kabaddi women players were in each group. During 3 months period, stretching training was given to each group. Objective of the study to measure effect
special training of women kabaddi players to measure effects of static stretching on women kabaddi players. Methodology. The present study focused on special training on the 20 kabaddi women players. Three equivalent group design was utilized to study the effect of the training on static stretching. The following sit and reach test was flexibility. Nelson land reaction time test were employed to ascertain the selected 20 kabaddi women players in each group using opposite random sampling method. Discussion and finding of this study. The finding of the study relevant that there was significant on flexibility and hand reaction time for all the groups. In the case of flexibility and hand reaction time, all the groups had shown improvement, but it was significant while comparing with the table value 0.05 level and 0.01 level. By comparing the mean of pre and post test, it can be concluded that this of training can be recommended for improving hand reaction time for general population. The result of this study show that there is significant difference between all the groups static stretching treatment test scores. References which I use for this study. Thank you for patience listening. Okay, thank you, madam. Next, Meenakshi Pahuja, ma'am. Hello, sir. If you could give me the screen sharing option. Sir, it's not giving the screen sharing option. Should I read out? You can present, ma'am. Just I share can your present. screen. Actually, previous screen was appearing on the screen, so there was a problem. Yes, you're right. Next paper presenter, Dr. Jay Kumar Shirsagar, sir. Ready रहिए, sir. Sir, I think I'm having a little problem. Can I read out, if you don't mind? Okay. You can read out. Okay. Thank you very much. I think it's a problem here. I don't know. Yes, it is appearing, ma'am. Yeah. Yes, your screen is showing. Oh, it is? Yes, it is coming late due to network problem, but it is showing on screen. Not start screen sharing while the other participant is sharing.
anyways, no problem. Okay. Hello. Good afternoon, everyone. I'm not sure whether I am visible or not. Yes, you are visible. Am I, okay, thank you very much, sir, for confirming. I hope I'm audible. And I'm very grateful to the organizers for giving me the opportunity to present my paper. Sorry, my activity is ready, but somehow I'm not able to share. So today my topic is the significant impact of COVID-19 on the global sports. This paper is an attempt to understand and highlight the impact of pandemic COVID-19 on the global sports. And we all know that what all we have gone through and the difficulties, the struggle at the sports industry, the coaches, the support staff, athletes, all the stakeholders involved had to go through during these difficult times. When we talk about the estimate and the global sports industries, I would like to share in 2011, it was estimated 45%. It was a turnover of 471 billion now in 2018. So you can understand the kind of money which is involved, and because of coronavirus, everything had to be stopped, and the trajectory was on the downward side now. Now every part of the sporting, value chain has been affected, from athletes, teams, leagues, to media broadcast. Everything is affected, right? The world of sports came to a standstill with the sudden global lockdown, the massive restraint of the sports market, right? In 2020, as government globally imposed lockdown and restricted domestic and international travel, limiting the services just to the essential services and establishment of sustainable, our sports tourism and economy, everything came to a standstill. We all are aware of it, and the entire sports tourism also came down crashing, right? When we talk about the mega sporting event, we all are aware that the mega sporting event 2020 Summer Olympics Tokyo is now rescheduled to 2021. So we all know the impact of what we all had to see and go through. We know that somewhere there is an immense hope that the revival of sports can come with a phased manner, reopening, unlocking. We all are waiting for our sports fraternity to come back on ground, and the field which is very dynamic and full of action, right? So in the new normal, each country, each government, in sports evolving, is trying to evolve a mechanism where reopening of the sports globally can happen with the SOPs and sports infrastructure and areas. Everything can reopen and take on. We all are very hopeful that it will change. Just to highlight, as my paper was, on the significant impact, and I identified through my paper this different, long list of areas where I visualize after reviewing the literature, the news clippings, and going through the literature available on an IOC site and Tokyo Olympic site and all that. So to know that with the cancellation of and the postponement of the sports event, it has been, and very big overturn in the sports calendar of national, I would say internationally all over.
Then the next area, if I want to highlight the impact, is sports tourism. It's a very big industry, and once we all know when it was a global, announced, everything was stationed. The international tourism also, all the domestic and international flights came to standstill, and it has impacted the entire sports tourism in a big way. Then the sports venues and the sports venue workers and support staff. We know how many people came down to being on penniless situation when the stadiums, all were just on that standstill position. Um, yeah, so that was a lot of issue, and we all know that social distance norms were to be followed. So action, dynamic sports, entertainment came to a halt. We all know that, right? So the media rights, the commercial rights, everything, the broadcasters, everybody had to go through a lot. And when we talk about, the commercial side of the sport, even the business model of our sports, these are the IPLs, the leagues, all that. And all these leagues, we talk about these big events of so-called the business model of sports halted during pandemic. The private leagues during the period got cancelled. In simple terms, these if we talk about these income, they earn through sponsorship, then the media rights, and when these events are on, that is the ticket and hospitality. So you can understand the industry, these business module, these leagues, all these are. So everything was again still internationally. If we talk about the main focus of sports is Ma'am, beautiful. thank you. You're there till you're Thank you, ma'am. performing. Thank you. You can understand the performance of the athletes. Everything was standstill. The players were not getting to play, to perform. There was, salary cuts. They lost their branding. They lost. Meenakshi, ma'am, thank you. Thank you, Oh, ma'am. Thank you. I have so much. Can you give me a minute? I've worked very hard. Can I please share a little bit on my conclusion, please? Okay, 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 ma'am. I'm very grateful. Thank you for the opportunity once again. So to conclude, I would like to say the world of sports too is suffering from the global effect of COVID-19 as it continues to ripple through the world health, education, finance, commercial institutions, sports ecosystem is different. Undoubtedly, COVID-19 pandemic had caused the most the significant disruption to athletes, to sports, worldwide sporting calendar, sports tourism, sports good. Even the mega sporting event, in my conclusion, I would like to repeat again, Tokyo Olympics. Throughout this period, the spectators had no game to watch, and there was, for players, no game to play. So the situation was too tough for everyone. But it gave a big high to the esports, and the emerging area of esports and gaming emerged out during this period, which is now a very big area of work. And one cannot rule out the existence of esports because the viewership, the gaming and monetization model, which has come up, is again an area of scope for us in physical education in our sports industry that one needs to highlight. And before I conclude, I have two more points to share, sir. Sorry, I'll take a minute. One cannot deny the absence of real sports, but sports, it gave us sports an opportunity for virtual technologies to grow. The sports for the year taught and brought people together all over the world through this potential, I would say the e-world. And if I have to say, when Nelson Mandela said, sports has the power to change the world. So let's enjoy the power that sports gives to all of us in the new normal. With the reopening of the stadiums, all are hoping for the revival of the global sports in these difficult times. The ability of sports to bring people together is more than ever. But
let's say the sports, the global sports industry itself may be a new territory, but with the right strategies and implementation of the same can emerge from the crisis even more stronger. And let's hope it makes sports even more popular. Learning and information is the key for the sports industry to develop resilience against the future pandemic and other natural disasters. We must learn and must evolve and must grow. That's where I would like. And thank you very, very, very much for the opportunity once again. I deeply appreciate that. Thank you, sir. Thank you, Meenakshi ma'am. Thank you. Yes, sir. Next Thank you very participant, much. Dr. Really appreciate Jaykumar the Shirsagar. opportunity. If any questions, I'm more than happy to answer questions and the impact and the significance of the global, on the sports sector. Yes. डॉक्टर जय कुमार क्षीरसागर सर प्रेजेंट हो आप? डॉक्टर जय कुमार क्षीरसागर सर. नेक्स्ट डॉक्टर बबलू शिवगिरीवार सर. सर आप प्रेजेंट हो? ओके सर. नमस्कार. आजचा विषय आहे माझा महाराष्ट्र आणि विदर्भात 21 मार्च 2020 ते 21 मार्च 2021 मध्ये कोरोना व्हायरसचा उद्रेक व त्याचा परिणाम. डॉक्टर बी विश्वेश्वरय्या, संचालक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अण्णासाहेब गुंडेवार कॉलेज, नागपूर. ऑडिओ येत आहे? चीनच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 26 डिसेंबर 2019 रोजी वुहान शहरात संक्रमण कोरोना व्हायरस आढळल्याची पुष्टी दिली. 30 जानेवारी 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने या विषाणूचा उद्रेक हा सार्वजनिक आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी असल्याचे जाहीर केले. 21 मार्च 2020 रोजी कोरोनाचा उद्रेक हा जागतिक महामारी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. 29 जानेवारी 2020 रोजी भारतातील महाराष्ट्र पहिला रुग्ण केरळमध्ये आढळला. महाराष्ट्रातील कोरोना व्हायरसची लागण झालेला पहिला रुग्ण पुण्यामध्ये 9 मार्च 2020 रोजी आढळून आला. महाराष्ट्रातील पहिला बळी 16 मार्च 2020 रोजी मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयात उपचारादरम्यान झाला. कोविड-19 महाराष्ट्रामध्ये 9 मार्च 2020 रोजी 2 रुग्ण होते. त्याच्यानंतर 1 एप्रिल 2020 रोजी 335 झालेले होते. त्याच्यानंतर 1 मे 2020 रोजी 11,506 रुग्ण झालेले होते. त्याच्यानंतर 1 जून 2020 रोजी 70,013 रुग्ण आढळले होते. याचाच अर्थ असा की आपल्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये याचा परिणाम झालेला आहे. शाळांमधून कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखणे सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1 ते 8वीच्या सर्व परीक्षा रद्द केल्या व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला. तसेच उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून विद्यापीठ, महाविद्यालय आणि ज्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम होत्या त्याचे वेळापत्रक पूर्ण ढकलण्यात आले होते. आर्थिक परिणाम 5.2 लाख कोटीचे कर्ज असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला कोरोनाच्या उद्रेकाने फार मोठ्या आर्थिक संकटातून जावे लागत होते. उद्योगधंदे सुरू नसल्यामुळे राज्य सरकारला जीएसटी मुद्रांक शुल्कमधून मिळणारा महसूल बंद झाला. वर्ष 2019 मार्च महिन्याच्या तुलनेत 2020 मार्च महिन्याची महसुली उत्पन्न 60% इतके कमी झाले. कृषी व्यवसायावर परिणाम भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या
सुमारे 58% हिस्सा हा शेतीवर अवलंबून आहे. कोरोनाच्या उद्रेकाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पूर्ण व्यवहार ठप्प पडल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक नियोजन बिघडले. लॉकडाऊनमुळे आठवडी बाजार बंद असल्याने तो प्रवेश झाला. संचारबंदीमुळे सी विटॅमिन साठी उपयोगात आणले जाणारे व तोडणीला आलेले लिंब हे फळ देखील सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील मालवंडी या गावातील शेतकऱ्याला कोरोना विषाणूमुळे शेतातच टाकून देण्याची वेळ आली. कोरोना विषाणूमुळे हाहाकार माजल्यामुळे द्राक्ष उत्पादन शेतकऱ्यांची निर्यात बंद झाली. पोटच्या पोरासारखी सांभाळलेली द्राक्ष बागेतील द्राक्ष तोडायला मजूर नव्हते. बाजारात न्यायला व्यवस्था नव्हती. म्हणून बागायतदाराने स्वतःच्या हाताने आपली बाग तोडून टाकली. पोल्ट्री उद्योगमध्ये महाराष्ट्रात बॉयलर चिकनची 1 दिवसासाठीची मागणी ही अंदाजे 28,000 टन एवढी आहे. पोल्ट्री उद्योगाला फार मोठा या कोरोनामुळे धक्का पोहोचला होता. वाहन उद्योगावर परिणाम. कोरोनाच्या उद्रेकाचा महाराष्ट्रातील वाहन उत्पादन उद्योगाला मोठा फटका बसला होता. 27 मार्चच्या एका अहवालानुसार कोरोना विषाणू उद्रेकामुळे मुंबईमधील सेवा क्षेत्रातील दर महिना कमीत कमी 16,000 कोटी रुपयाचे नुकसान झाल्याचे अंदाज होते. पर्यटक व्यवसाय. पर्यटकावर याचा फार मोठा परिणाम झालेला असून अजिंठा, वेरूळ, लेणी, गेटवे ऑफ इंडिया यासह राज्यभरातील पर्यटक स्थळावरील गर्दी नाहीशी झाली. हॉटेल्स, भाड्याच्या गाड्या घेऊन प्रवास करणाऱ्यांनी आपले प्रवास रद्द केले. रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यामुळे राज्य सरकारने अनेक धार्मिक स्थळे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विदर्भाची स्थिती 21 मार्च 2021 रोजी 6,727 रुग्ण होते. त्याच्यापैकी 59 रुग्ण मृत्यू पावले होते. महाराष्ट्राची स्थिती अशी होती. दिनांक 21/3/2021 रोजी 30,535 रुग्ण होते. त्याच्यामध्ये 99 मृत्यू पावले होते. या क्रीडा स्पर्धेवर याचा खूप मोठा परिणाम आला. शाळा, महाविद्यालय पूर्ण बंद असल्यामुळे कुठल्याही स्पर्धा झाल्या नाही. शालेय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय स्पर्धा महामुळे झाल्या नाही. तर विद्यापीठाच्या आंतरमहाविद्यालयीन क्रीडा स्पर्धा, आंतरविद्यापीठ स्पर्धा, अखिल भारतीय विद्यापीठ स्पर्धा बंद राहिल्या. लॉकडाऊनमुळे सराव आणि स्पर्धा होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आणि खेळाडूंचा शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकास झाला नाही. विद्यार्थी व खेळाडू यांचे नुकसान झाले. महामारीमुळे विद्यार्थी व खेळाडूंचे मानसिक नुकसान होऊन त्यांची प्रतिकार शक्ती कमी झाली. थँक्यू बबलू सर. थँक्यू डॉक्टर बबलू शिरगेवार सर. नेक्स्ट पार्टिसिपेट डॉक्टर अमित टेंबुर्ने सर. अमित टेंबुर्ने सर प्रेजेंट हो आप? यस सर प्रेजेंट. ओके 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 ओके. डॉक्टर अमित टेंबुर्ने सर प्रेजेंट हो? Okay, I am present, sir. Now, the topic of my presentation is comparative study on level of Indian national game hockey versus international game cricket. Actually, this topic is very much famous in our discussion regarding our national game hockey and cricket. Everyone is considering that hockey
is better or cricket is better in India. But in which parameters it is better, we have find it in this. We are trying to find in this study. So first of all, the hockey is the national game of Indian hockey team, and we have achieved almost all gold, 8 golds, 1 silver, and 2 bronze medal in Olympics. And cricket is governed by Board of Cricket Council of India, and it is full-time member of International Cricket Council. And we have won first World Cup in 1983 in the captainship of Kapil Dev. And we are also know that IPL is the largest cash flowing domestic cricket competition. So if we go through the historic journey of the hockey, we have seen many controversies gone in the functioning of the hockey. Okay, so some of these controversies are fight between 2 federations. Like previously it was Indian Hockey Federation, and it is shifted to Hockey India. There were players were giving strike for incentives. There was some sex scandals also appeared, and after that we were failed to qualify first time in Beijing Olympic in 2008. And here, apart from that, Indian cricket team is adding so many feather in their achievement by winning T20 World Cup in 2007 and Cricket World Cup in 2011. Okay, so there are many prize money differences also there we found, and we have taken so many things to compare for the study. The delimitation was evidences was collected from information resources, literature, and from different sports organizations. Actually, it was very much difficult for us to collect the information. Therefore, we were depend on the information resources and the internet site of the federations. And the duration was 2006 to 2011 for 5 years. Okay, so we can discuss here what analysis we found. In hockey, hockey is included in Olympics, and cricket is not included yet in Olympic. Hockey, we won the 8 consecutive gold medal in Olympic, and 1983 cricket team won their first World Cup. Hockey first time failed to qualify in Olympics, and recent years India won T20 World Cup in 2007 and second World Cup in year 2011. It is very surprising that hockey is not providing the prize money to the players, because we didn't find any prize money competition in hockey as compared to cricket, because its famous prize money competition is Indian Premier League. So in cricket, number of prize money competition has been being organized. In hockey, number of domestic tournaments were organized, but there is no fixed prize money found in the domestic tournaments. And in cricket, less competition organizing, but they are providing the prize money to their players. In hockey, no fixed criteria for prize money. It is purely depend on the organizers or the sponsorship. And in cricket, BCCI is providing plenty of prize money. And in hockey,
we found very less infrastructure available in India. But as far as compared to cricket, there are number of cricket infrastructure are available in India, and the ratio was 5:48. And you can see the earning differences. The federations are providing lesser money, therefore players are gone for the strike to get their wages. Federation is providing 1,000 for scoring a goal when India won the Asia Cup in 2007. Not a single player in hockey to endorse a product. Player is getting $14 as per time allowances when they tour abroad. So that is the difference between $1 million cricketers and $14 per day player. And here, if we see, cricket players are getting 5 sources of income. First is annual retainer fees. If you see grade 1 player, he is getting 1 crore. Grade B player, it is getting 50 lakhs. Grade C player, it is getting 25 lakhs per annum. And regarding the match fees, if any player plays test match, he gets 7 lakhs. If he plays one day international match, he gets 4 lakhs. And T20 match, he gets 2 lakhs. If you see the performance bonus, T20 World Cup, it has provided 10 lakhs per player, and World Cup 1 crore per player. If you see endorsement, MS Dhoni is endorsing 19 brands and earning 6 to 7 crores per brand. And Tendulkar was endorsing 16 brands and was earning 4 to 5 crores per brand. And Yuvraj 4 crores per brand. Regarding IPL salary, if you see, Gautam Gambhir was taken $2.4 million in 2007, and Robin Singh was hired for $2.1 million. So here are the salary differences and prize money differences in cricket and in hockey. If you see the television ratings in 2000 World Cup hockey, India versus Spain was 2.13 television rating. India versus Pakistan was 2.02 television rating, and India versus Australia was 1.93 television rating. As far as compared to cricket, if you see 2011 World Cup, that was an average of television rating of 16.0. Okay, here you can see the highest television rating is 2.13, and in cricket 2011 World Cup, the highest television rating was 16. And if you see the celebrity following, in 2010 World Cup, Priyanka Chopra, Virendra Sehwag and Rajyavardhan Rathod was present to promote the World Cup. And in cricket World Cup 2011, there were a number of superstars attended the semis and finals. And if you see the world ranking, in 2011, the current ranking of the hockey was 10th position for men's and 13th for women. And in cricket, it is 4th in test ranking, 3rd in ODI ranking, and 7th in T20 ranking. So here are the founding findings of the study, that hockey is our national game, but it is still suffering and trying to cope from many hurdles. And cricket is having more better future ahead, looking to their performances and cash flows. The conclusion and recommendations. Indian government organization should develop more infrastructure, and there should be fixed criteria for prize money for competition, or prize money competition must be organized to catch the talent.
Sufficient salaries must be provided to hockey players, and better training and coaching facilities must be provided to the players. So that was the conclusion and recommendation in our study. I think it is over now. So thank you very much. Thank you, Dr. Amit Temburne sir. One question. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो. Dr. Amit sir, what about cricket commentator? They are also part of cricket. Yes, sir. We did some studies on prize money and salaries of the officials and players of the cricket, as well as in the hockey. So you will find that cricket official is also getting the highest salary as compared to hockey player or hockey official. So therefore I mentioned that in cricket there is a wide scope for the salaries of the players and for the officials. Thank you, Dr. Amit Temburne sir. And can I ask one question? Okay. Yes, Ashwini. Sir, when we compare hockey and all team games and actually the sports and game which are included in Olympics than with cricket, because cricket is a recreation game, and when we compare recreation game with so many professional games, I'm not contradicting cricket, but as we know, it is a recreation game. We are learning from our basic education. It is a recreation game, and these are a professional games. So how can we compare this and with that? And second thing is, sir, the funding and their salaries and all. Government should take a good decision about this. As you mentioned, structured process for each and every game. Not one game is more highly rich game. One game is a poor game. When we go to tennis and badminton, cricket, these are very rich games and rich people can play. This thing is already the type of influence is already started. So how can we tell that games and sports for everybody from basic level? If we compare other countries and everybody, they whichever game they want to play, they will game. But in India, only specific people, if they are rich, they can play for tennis because they can afford racket. So these all how we can overcome. Do you have any idea about it, sir? Yes, that is why I mentioned in my study. Actually, my study was about finding the professionalism and prize money at national and international level. And for this study, we considered 5 games. That was badminton, that was and cricket, basketball, lawn tennis, and one more game. So we discussed with the peoples what is the current situation of the hockey as compared to cricket, because if you see previously before IPL starts, okay, there were no cash flow in the cricket as it is existing after the appearance of IPL. Okay, and if you see, it has changed the scenario of the India regarding the sports. You can see
The Pro Kabaddi League is also organizing. Okay, many rugby pro competitions are also organizing. Badminton pro competitions are also organizing. It is actually attracting the professional players to represent and actually take medals from the world. Okay, so it is also giving professional approach for the achievement in the game. Okay, so as far as if you find out about the hockey, we gone through the previous journey in the hockey. It was struggling for the performance. Okay, but it is actually not achieving as it needs, because it is our national game and we must focus for the okay. True, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Amit Tembune, sir. Very nice paper presentation, and thank you, Ashwini ma'am. Next paper presenter, Professor Saket Kanetkar, sir. Are you present, sir? Yes, sir, I am here. Am I audible? Okay, sir. Okay. वो उसका भेजा मैंने फोटो. Sir, is my PPT visible? Yes, it is visible, sir. Okay, very good afternoon to everyone, and thank you for giving me this opportunity to present my presentation. Myself, Saket Kanetkar, and today I am going to share with you the topic that is return to the game post-COVID, injuries and their prevention. In this, author is Dr. Amruta Pandey. She is from IDCP College, and she has joined us in this session also. So the topic is return to the post game. So first PPT, that is objective. The objective behind this topic is to provide practical recommendation to both professional and non-professional players returning to the sports after आफ्टर लॉकडाउन. सो आई होप कि ये जल्दी आए कि हम लोग रिटर्न अपने अपने कोर्ट से अपने अपने ग्राउंड पे जल्द से जल्द जा सके. और जब जाएंगे तब हमें किस चीज़ की तरफ ध्यान देना और क्या ध्यान में रखना है, वो कोशिश किया हो मैंने मेरे इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करने का. So first is effect of confinement. Due to COVID, we are confined in our houses or our places. So सबसे major effect जो confinement का हुआ है वो है de-training. अभी de-training means we have partial or complete loss of previous physiological adaptation to the physical exertion caused by a period of training interruption. यानी जो ब्रेक मिला है जिसके कारण हमारे बॉडी पे यानी हमारे फिजिकल कैपेबिलिटीज पे जो इफेक्ट हुआ है, जैसे कि हमारा बॉडी मास हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया, लॉस ऑफ एफिकेसी ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके कारण हमारी स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस और साथ ही में रिस्क ऑफ इंजुरी भी काफी बढ़ चुका है. सो इंजुरी नेक्स्ट स्लाइड इज इंजुरी प्रिवेंशन एंड पोटेंशियल रिस्क. अभी क्या होगा जब रिस्क ऑफ इंजुरी, जब हम रिटर्न होंगे कोर्ट पे या हमारे ग्राउंड पे, तब रिस्क ऑफ इंजुरी काफी टाइम के बाद लौटने के कारण हमें हो सकता है इंजुरी के चांसेस बढ़ेंगे. इसमें इंजुरी के चांसेस बढ़ने के चांसेस इसलिए क्योंकि ड्यू टू डी ट्रेनिंग और कन्फाइनमेंट हमारे ऊपर, हमारे फिजिकल कैपेबिलिटीज के ऊपर काफी नेगेटिव इफेक्ट हुआ है इस चीज का. तो हमें हमारा जो ओरिजिनल फिटनेस लेवल था उसको रिस्टोर करना सबसे मेजर टास्क रहने वाली है हम लोगों के लिए. बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड कोच, ये हमारे लिए मेजर टास्क रहने वाला है. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ मसल इंजुरीज. अभी काफी टाइम से हमारे मसल्स इनएक्टिव होने के कारण
देयर इज अ मीन्स काफी देर से इनएक्टिव रहने के कारण हमारे जो स्ट्रेंथ और पावर में जबरदस्त नुकसान हुआ है। स्टडीज में देखा गया कि एलिट एथलीट अगर 2 हफ्ते या नॉर्मल पर्सन 4 हफ्ते तक अगर इनएक्टिव रहता है तो उनमें ये लॉस देखा जा सकता है। तो हम लोग तो 1.5 साल से हम लोग कन्फाइंड है या कुछ एक्टिविटी कर नहीं पा रहे, तो हमारे में कितना नुकसान हुआ होगा। और जो हम इनएक्टिव है उसके कारण हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइबर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एट्रोफी बोलते हैं जिसे हम, और साथ ही में उसका कंपोजिशन जैसे हमारे फास्ट टाइप फाइबर टाइप 2 जो स्लो टाइप फाइबर में ट्रांसफॉर्म होने के भी चांसेस है रहते हैं, मीन्स ऐसा है, जिसके कारण हमारा परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड में भी कम हो सकता है। जिसके कोविड के कारण इम्पैक्ट ये जो स्ट्रेंथ और स्पीड जो है इसके कारण जो प्लेयर्स है फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, जिसमें डिमांड जो गेम डिमांड करते हैं फास्ट एक्सेलरेशन और हाई स्पीड, वो प्लेयर्स को ये तकलीफ होने वाली है ड्यू टू मास मींस स्ट्रेंथ और पावर के कारण, पावर और स्पीड के कारण हमें ये नुकसान मसल इंजरी होने के चांसेस है। क्या होगा कि हम लोग पहले जिस लेवल पे खेलते थे उसको हम जब खेलने वापस जाएंगे और वही स्पीड से रनिंग शॉट या वही स्पीड से एथलीट अगर 100 मीटर का वही स्पीड से एकदम पहले दिन आके दौड़ना चालू करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू हमारे मसल इनएक्टिविटी के कारण। तो अगर मसल इनएक्टिविटी से ओवरकम करना है तो जब भी हम प्लेयर्स रिटर्न बैक टू नॉर्मल आएंगे तब हमें ध्यान रखना है कि मल्टी कंपोनेंट प्रिवेंशनल प्रोग्राम जो कि काफी इफेक्टिव है इन प्रिवेंशन ऑफ मसल एंड जॉइंट इंजुरीज, ये ध्यान में रखते हुए हमें हमारे प्लेयर्स की कोचिंग या ट्रेनिंग की तरफ ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो हमें करनी है वो है ये तो हो गया इंजुरीज के पार्ट। अभी ट्रेनिंग में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है वो है पहले तो एरोबिक ट्रेनिंग। तो एरोबिक ट्रेनिंग चालू या कोई भी ट्रेनिंग हम जब प्लेयर रिटर्न आएंगे ट्रेनिंग चालू करने के पहले हमें उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस कुछ चेंजेस हुई तो नहीं है वो ध्यान रखते हुए उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। ट्रेनिंग स्टार्ट करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिसका थिंग्स आर इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ये कोचेस या हमें डिसाइड करना है उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखते हुए कि किस प्रकार की ट्रेनिंग उसे देनी चाहिए। ये अगर मैं बात करूं एरोबिक ट्रेनिंग, इसको हम 3 फेज में डिवाइड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले फेज में हम लोग को इंटरवल ट्रेनिंग कराना पड़ेगा प्लेयर्स से, जो कि सेशन 20 मिनट से कम नहीं रहना चाहिए। सेकंड सेशन जो रहेगा हमारा इंटरमिटेंट ट्रेनिंग, जिसमें हम थोड़ी हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज के साथ हम लोग प्लेयर उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जो है थर्ड फेज, ये जब थर्ड फेज हमें किस प्रकार इंप्लीमेंट करना है कि हाई इंटेंसिटी बॉल एक्सरसाइजेस, यानी जो इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम लेवल जैसा, बट सिर्फ थर्ड फेज नहीं इंप्लीमेंट करना है हमें। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, तीनों प्लेयर जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तब वो उसके शेड्यूल या ट्रेनिंग शेड्यूल में इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग है हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को हम 2 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। पहली ट्रेनिंग एटलीस्ट 10 सेशन तो भी हम लोगों को ये करना है, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे मसल हाइपरट्रॉफी। क्या हो गया, इनएक्टिविटी के कारण मसल मास लॉस होने के कारण हमारा एट्रॉफी जो मैंने पहले स्लाइड में शेयर किया था उसको हमें दूर करते हुए हमारे जो मसल हाइपरट्रॉफी है उसकी रिकवरी की तरफ ध्यान रखते हुए हमें ऐसी एक्सरसाइज सजेस्ट करनी है जिसका रिदम और एग्जीक्यूशन शुड बी जिसमें एग्जीक्यूशन और जिसका जो हमें एग्जीक्यूशन करना है वो स्लो और कंट्रोल्ड पेस में रहे। सेकंड है हमारा स्टिमुलेशन ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स। इसमें हमें क्या करना है, जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो एट मैक्सिमम स्पीड करना है। मैक्सिमम यानी जो प्लेयर हम जो हम छोड़ चुके थे एक्सरसाइज जिस स्पीड पे करना वो स्पीड पे वापस करने की कोशिश करना है। अभी देखा ये गया है कि इसेंट्रिक कंसंट्रेशन रेजिस्टेंट ट्रेनिंग अगर हम हमारे प्लेयर्स या स्टूडेंट्स को देंगे तो उसमें ये जो इसेंट्रिक कंसंट्रेशन ऑफ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है ये इफेक्टिव पाई गई है प्रिवेंशन ऑफ मसल इंजुरीज और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी। सो हमें हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल में इसको भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है
फ्लेक्सिबिलिटी, अभी यही कॉन्फ्रेंस में 2 पेपर प्रेजेंट हुए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग के ऊपर उनका इंपॉर्टेंस था। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें जब प्लेयर रिटर्न आएगा कोर्ट पे उसकी तरफ ध्यान देना है। स्ट्रेचिंग जो हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमें इंक्लूड करनी है जो कि हमारे वार्म अप सेशन में एटलीस्ट 30 सेकेंड्स हमें हमारी स्ट्रेचिंग शेड्यूल उसको देना पड़ेगा। डायनेमिक जैसा डायनेमिक और जैसा इसी कॉन्फ्रेंस में 2 पेपर प्रेजेंट उसमें स्ट्रेचिंग का साकेत सर थोड़ा कंक्लूजन बता दीजिए सर। लास्ट ही स्लाइड है ये। तो डायनेमिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें हमारे वार्म अप एक्सरसाइज में इंक्लूड करना काफी जरूरी है। So with this, I come to this conclusion. We come to this conclusion that काफी ये जो पीरियड है इसके पहले वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हुआ था जब काफी टाइम तक लोग इनएक्टिव थे और वो टाइम का हमारे पास कुछ डाटा नहीं कि वापस प्लेयर किस प्रकार आया था या कैसे क्या रिटर्न को हुआ था। तो हमारे पास एविडेंस ना होने के कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अननोन जो हमें जिसको मैंने टर्म दिया है। और इसमें हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है लॉस ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्क ऑफ इंजुरी और हमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन सिस्टमैटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंट सिस्टमैटिक चेंजेस। जैसे मैंने कहा कि हमें हमारे ट्रेनिंग के में थोड़ा सुधार करके कुछ तो भी नया लाना पड़ेगा, वही मैंने कंक्लूड किया है। और जो आने वाला टाइम है वो काफी डिमांडिंग और चैलेंजिंग रहने वाला है हम लोगों के लिए, बेसिकली फिजिकल एजुकेटर और कोचेस, ट्रेनर्स, क्योंकि हमें वापस ये जो प्लेयर जो हमें छोड़ के गए थे वो टोटली एक नए अवतार में मिलने वाले हैं। सो हमें उसके लिए रेडी रहना है और हमारा प्रेजेंटेशन उसी थीम को पकड़ के था। सो विद दिस आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू साकेत कानेटकर सर एंड डॉक्टर अमृता पांडे मैडम. Next participant paper presenter are Dr. Ranjit Patil. Yes, sir. I am ready. Okay, sir. Now start. सर मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? ओके. हेलो. जी सर. हेलो. जी सर बोलिए. सर माझे हो दिसत आहे तर माझा ओके थँक्यू सर. तर माझा रिसर्च टॉपिक आहे आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स मधील प्राथमिक कार्यक्रमाचा मुलांच्या फ्लोर एक्सरसाइज पातळी कार्यक्रमावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास. हा माझा PhD चा रिसर्च टॉपिक आहे. नेक्स्ट पार्श्वभूमी प्रस्तावना. जिम्नॅस्टिक्स या शब्दाचा जर का आपण अर्थ पाहिला तर ग्रीक या शब्दापासून जिम्नॅस्ट या ग्रीक शब्दापासून जिम्नॅस्टिक्स हा शब्द बनलेला आहे. आणि अर्थाने जर बघितलं तर कमीत कमी कपडे घालून शरीर संवर्धनासाठी जो प्रकार केला जात होता त्याला आपण जिम्नॅस्टिक्स असं पूर्वी समजलं जात होतं. जिम्नॅस्टिक्स मध्ये पूर्वी डंबेल्स उचलणे किंवा रनिंग, कुस्ती, रोप चढणे, लॅडर, डंबेल्स इत्यादी वेगवेगळे प्रकार आपण त्याच्यामध्ये आधुनिक मध्ये पूर्वीच्या जिम्नॅस्टिक्स मध्ये अंतर्भूत केलेले होते आणि त्याच्यामध्ये काळानुसार बदल होत गेलेले आपल्याला दिसून येतात. जिम्नॅस्टिक्सच्या प्रकारमध्ये आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स, ॲक्रोबॅटिक जिम्नॅस्टिक्स, एरोबिक जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅम्पोलिन, थंबलिन आणि आता नवीन लेटेस्ट ऍड केलेला पावका जिम्नॅस्टिक्स आहे. त्याच्यामधील मी आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स बद्दल तुम्हाला थोडी माहिती देतो. आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स मध्ये टोटल मुलांसाठी 6 ऍपरेटस आहेत, मुलींसाठी 4 ऍपरेटस असतात. संशोधन समस्येचे स्पष्टीकरण. सध्याच्या युगामध्ये जिम्नॅस्टिक्स वरती रिसर्च करणं गरजेचं आहे का, आणि जर का त्याच्यामध्ये जे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीवरती आपण जर का विचार करून त्याप्रमाणे मुलांना जर का ट्रेनिंग दिलं
तर त्याच्या मुलांच्या कार्यमानामध्ये काय फरक पडू शकतोय का, त्यांना आपण पातळीनुसार जिम्नॅस्टिक्स कार्यक्रम तयार करून त्यांच्यावरती राबवले किंवा ते देण्या अगोदर त्यांच्या प्राथमिक कार्यक्रम म्हणजे कंडिशनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम देऊन त्यांना आपण नंतर पातळी कार्यक्रम दिला, तर या सगळ्या गोष्टींचा त्यांच्यावरती काय फरक पडतोय का, त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार या रिसर्च मध्ये केलेला आहे. नेक्स्ट, गरज आणि महत्व काय आहे या रिसर्चचं, तर जिम्नॅस्टिक्स मध्ये खेळाडूंचं कार्यमान उंचवण्यास आपल्याला मदत होईल. त्याच्यानंतर उत्तम खेळाडू आपल्याला बनवण्यास मदत होईल. जो प्राथमिक कार्यक्रम आहे या प्राथमिक कार्यक्रमामध्ये मी काय केलं, त्यांच्या ताकद डेव्हलप कशी करता येईल, बेसिक जे जिम्नॅस्टिक्स साठी लागणार आहे ती ताकद या रिसर्च मधून आपण डेव्हलप करू शकतोय. पातळी कार्यक्रमामुळे जिम्नॅस्टिकच्या खेळाडूंचे जे मूलभूत कौशल्य आहेत, जे लिंक कनेक्ट आहेत एकमेकाला, ते डेव्हलप करण्यास आपल्याला मदत होईल. उद्दिष्ट, संशोधनासाठी निवडण्यात आलेल्या मुलांचे जिम्नॅस्टिक संदर्भातील क्षमतांचा स्तर तपासण्यात येईल. प्राथमिक कार्यक्रम तयार करणे व प्रायोगिक गटावरती तो राबवणे. प्राथमिक कार्यक्रम घेतलेल्या व प्राथमिक कार्यक्रम न घेतलेल्या गटावरती पातळी कार्यक्रम राबवणे. जिम्नॅस्टिक्स मधील विविध कौशल्य प्रक्रिया मूल्यमापन करून प्राथमिक कार्यक्रम घेतलेल्या व प्राथमिक कार्यक्रम न घेतलेल्या गटाची तुलना करणे. परिकल्पना, प्राथमिक कार्यक्रमाचा मुलांच्या फ्लोर एक्सरसाइज कौशल्य पातळीवर परिणाम आढळून येईल. संशोधन पद्धती, या प्रस्तुत संशोधनामध्ये मी प्रथम सर्वेक्षण पद्धतीचा अवलंब केला होता. सर्वेक्षण पद्धतीमध्ये मी यासाठी अवलंब केला होता की सद्यस्थितीमध्ये काय चाललेलं आहे जिम्नॅस्टिक्स मध्ये, त्याचा मी प्रश्नावली थ्रू आणि इंटरव्ह्यू मुलाखतीद्वारे मी अभ्यास केला होता. त्याच्यातून मला असं दिसून आलं की जे जिम्नॅस्टिक्स चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये, पुण्यामध्ये आणि आपल्या इथं महाराष्ट्रामध्ये इतर जिल्ह्यामध्ये, त्याच्यामध्ये लेवल पातळी आपण बऱ्याच कोचेसना किंवा मार्गदर्शकांना माहित नाही की कशा प्रकारे राबवतात. आपण डायरेक्टली त्यांना कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग द्यायला चालू करतो, ते या मला सर्वेक्षणावरून दिसून आले. त्याच्यानंतर मग मी प्रायोगिक पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे, कारण की जे समस्याचे निराकरण करण्यासाठी जो गट निवडला आहे त्याच्यावरती प्रयोग राबवणे आवश्यक आहे, त्यामुळे मी प्रायोगिक त्याचा अवलंब केला आहे. संशोधन अभिकल्प या पद्धतीने आहे. याच्यामध्ये मी 2 गटाची निवड केली होती. प्रथम मी 350 विद्यार्थ्यांची निवड केली होती, सामान्य 350 विद्यार्थ्यांची निवड केली. त्यातून मी 2 गटांची समान स्तर असलेल्या 2 गटांची निवड केली. जो प्रायोगिक गट आहे त्याच्यावरती मी प्राथमिक कार्यक्रम प्रथम राबवला, नियंत्रित गटावरती प्राथमिक कार्यक्रम राबवला नाही. प्राथमिक कार्यक्रमामध्ये मी काय केलं होतं, प्राथमिक कार्यक्रमामध्ये त्यांना कंडिशनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दिले होतं. त्याच्यामध्ये रणजित पाटील सर, काही प्रॉब्लेम आहे का? इन्व्हॉल्व केलं होतं आणि त्याप्रमाणे त्यांना ट्रेनिंग दिलं होतं. नियंत्रित गटावरती नाही राबवलं. त्याच्यानंतर टेस्ट रणजित पाटील सर, तुमचा आवाज नाही येत आहे. यस. डॉक्टर रणजित पाटील सर, तुमचा आवाज नाही येत आहे. हॅलो, सॉरी सर. आय थिंक थोडा नेटवर्क इश्यू होता त्यामुळे. ओके ओके. हा सर, इकडे मी अभिकल्प मध्ये त्यांना 2 गटाची निवड केली होती. त्याच्यामध्ये मी एक प्रायोगिक गट घेतला होता, नियंत्रित गट. त्यांच्या सामान्य टेस्ट घेतल्या होत्या. पाटील सर, कन्क्लुजन सांगून द्या ना. ओके सर, ओके.
तर याच्यामध्ये मी जे प्रथम टेस्ट घेतल्या होत्या त्याच्यामध्ये कन्क्लुजन त्यांचं मी स्कोर कन्वर्ट केला होता. याच्यामध्ये प्री टेस्ट ज्या पूर्वीच्या टेस्ट होत्या त्याच्यामध्ये जे विद्यार्थी होते बेसिक टेस्ट मध्ये याच्यामध्ये मी 7 टेस्ट घेतल्या होत्या बेसिक जिम्नॅस्टिक्स मूलभूत मध्ये. स्ट्रेंथ रिलेटेड टेस्ट होत्या, स्ट्रेंथ आणि इंड्युरन्स रिलेटेड. आणि जिम्नॅस्टिक सुदृढता मूलभूत सुदृढतामध्ये मी 3 टेस्ट घेतल्या होत्या त्या फ्लेक्झिबिलिटी रिलेटेड होत्या. तर याच्यामध्ये प्रथम नियंत्रित गटामध्ये जे आहेत पूर्वी मला साधारण आणि चांगल्या या गटामध्ये त्यांचा स्ट्रेंथ जास्त दिसून आली. त्याच्यानंतर नियंत्रित गटामध्ये मला याच्यामध्ये दिसून आले उत्तर टेस्ट मध्ये त्यांचं चांगल्या आणि अति चांगला याप्रमाणे पुढील टेस्ट मध्ये मला दिसून आलं. त्याच्यानंतर हे कन्क्लुजन आहे जे बेसिक टेस्ट घेतल्या होत्या मी मूलभूत क्षमतांच्या त्याच्यामध्ये मला फरक दिसून आला नाही. पण जे सुदृढता टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये मला जर का मी जेड परीक्षेद्वारे जे बघितलं त्याच्यामध्ये मला फरक दिसून आला. आणि कॉम्पिटिशन जे फायनल परफॉर्मन्स मी चेक केलं त्यांचं त्याच्यामध्ये मला जास्त चांगल्या प्रकारे परफॉर्मन्स दिसून आला. याच्यामध्ये असं दिसून आलं मला की जर का आपण मुलांना फर्स्ट बॉडी डेव्हलपमेंट एक्सरसाइज दिल्या आणि त्याच्यानंतर लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलं तर त्यांचा फ्युचरमध्ये चांगलं परफॉर्मन्स होऊ शकतं. हे माझ्या रिसर्च मधून मला दिसून आलं. हे निष्कर्ष आहेत आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स मधील प्राथमिक कार्यक्रमाचा प्रायोगिक गटाच्या कार्यमानावर परिणाम झाला. ओके सर, थँक्यू सर. डॉक्टर रणजित पाटील सर गटाच्या कार्यमानावरती परिणाम झाला प्रायोगिक. ओके यस, थँक्यू सर. ओके सर, ओके. नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर केशिम सत्यराजन प्रेजेंट हो गया? सत्यराजन. Yes, sir, present. Okay, sir. Now you start. Yeah. Let me check my slide again. Okay. प्रवीण सर नाव काय म्हणाल? हॅलो, सत्यराजन सर. सत्यराजन. येस सर. अच्छा ठीक. Are you okay, Satyarajan sir? Yes, sir, I'm okay. I'm finding my PPT. You're finding? My PPT. Where you lost? On the phone, I'm just Sir, searching you it. can read out directly. You lost your PPT? Okay, should I read out directly, sir? Yes, okay. Without sharing the PPT? Yes, you can read out. Okay, so should I start now? Yes, you can start now, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. मैं केशम सत्यरंजन मणिपुर यूनिवर्सिटी से. Before I start my presentation, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा to the organizing committee of NUPETA for selecting my paper and allow me to present in such an important seminar on International Multidisciplinary Conference on Contemporary Approaches and Application in Physical Education and Sport Sciences. The topic of my presentation is comparative study on selected physical fitness between female aerobic and yoga groups. My introduction, physical fitness is a general state of health and well-being, और ये एक क्वालिटी है जो स्पोर्ट्स और हमारे रोज के काम में अच्छा परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए. It is generally achieved through correct nutrition, moderate to vigorous exercise or activities, and sufficient rest. Statement of my problem. The purpose of my study was to compare the selected physical fitness between female aerobic and yoga groups of Manipur. Objectives of study: to find out and to compare selected physical fitness between female aerobic and yoga groups of Manipur. The limitations of my study.
My study will be delimited to female aerobic dance and yoga, जो hatha yoga भी बोलते हैं, और who practices asanas. The subject's age will range from 18 to 25 years. The present study will delimit to the available female subjects. The physical fitness components and measuring criteria will be delimited as for flexibility, I use sit and reach stage, and for muscular strength, standing broad jump, cardiovascular endurance के लिए हार्वर्ड step up, और speed के लिए 50 yards dash use करते हैं. Limitation of my study: food habits, diet, climatic conditions were not controlled. सर डायरेक्ट हाँ जी. सत्यनारायण सर, राजन सर, डायरेक्ट Yes, कंक्लूजन sir. बता दीजिए सर. Okay, okay. ओके. Yeah. Okay, my conclusion. On the basis of the statistical finding of my study, there were significant differences in selected physical fitness between yoga and aerobic players of female in Manipur. It is also observed that the aerobic group have better physical fitness than yoga groups. It is also further concluded that there were significant difference in flexibility, muscular strength, speed, and difference was observed in cardiovascular endurance. Thank you, sir. ओके Thank you. राजन सर, थैंक यू. Thank you so much, sir. आज के हमारे इस ओके सर, ओके. Yeah. आज के हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आज के चेयरपर्सन डॉक्टर अश्विन चंदेल सर, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जितने भी अपने पेपर प्रेजेंटर थे उनके बारे में 2 शब्द कहें. डॉक्टर अश्विन चंदेल सर. धन्यवाद प्रवीण सर. आज के इस इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस ऑफ कंटेम्परेरी अप्रोचेस एंड एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस, इस कॉन्फ्रेंस के अवसर पे आज जो अपने कॉन्फ्रेंस का जो सेकंड डे, ये सेकंड डे में जो दूसरे सेशन में हमारे सामने प्रवीण सर, आवाज आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है. ओके ओके. हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है. तो सेकंड सेशन में जो अपने पार्टिसिपेंट के सामने शीतल शेंडेकर, मीनाक्षी पहुजा, डॉक्टर बबलू सिरगिरवा सर, डॉक्टर अमित टेम्बुने सर, साकेत कानेरकर और अमृता पांडे मैडम, जो कि रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज के रंजीत पाटिल सर और सत्य रंजन जो सर मणिपुर से, इन्होंने जो पेपर प्रेजेंटेशन अपने सामने किया है, उनके जो पेपर्स, जो रिसर्च पेपर सबके सामने जो सबमिट किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ थे. और मैं एज ए चेयरमैन इस सभी पेपर को मैं रिकमेंडेशन करता हूँ. और इस जो कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे चेयरमैन करके जो एक चांस दिया आयोजकों ने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ. इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर प्रिंसिपल धोटे सर, डॉक्टर AP जोशी सर, अपने डॉक्टर देवेंद्र वानखेड़े सर, प्रिंसिपल दातारकर सर, संजय चौधरी सर, डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी सर, अमित सर, प्रवीण सर, तितरमारी जी, बबलू श्रीराव सर, विशाखा जोशी मैडम, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ. और ये जो
कॉन्फ्रेंस के लिए जो एक कोलैबोरेशन से 5-6 जो कॉलेज के माध्यम से ये जो अपना कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है, उन सभी कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो है ये अपना सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे की प्रक्रिया के लिए मैं प्रवीण पाटिल सर के पास में माइक हैंड ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत कीमती समय हमने आज यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में व्यतीत किया है सर। उसके लिए मैं आपका नुपिटा और हमारे सभी मेंबर्स की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much, Praveen sir. Now we are moving towards our seventh technical session. And for this session, we have with us Dr. Barit Bhattacharya sir. He is MBBS, MD, and PhD. He has done his MBBS from University of Jabalpur. He has done his diploma in psychological medicines, University of Calcutta. He has done his MD psychiatry from University of Calcutta. He has pursued PhD from University of Illinois at Urbana-Champaign. He was a fellow of Faculty of Sports and Exercise Medicine, Ireland in 2003. He was a member of the Faculty of Sports and Exercise Medicine, UK in 2007, a sports psychologist in Sports Authority of India 88 to 1992. He is also worked as a consultant psychiatrist in India, Australia, and UK. He is retired from Oxford Health NHS Foundation Trust, UK in 2016, and he has also published in Refereed journals and popular magazine. He is having his special interest in exercise psychiatry. So on behalf of organizing committee of this international conference, I welcome you, Dr. Barit Bhattacharya sir. And for this session, we have with us Dr. Vijay Datarkar sir as a chairperson for this session. He is a principal at Jyotiba College of Physical Education and chairperson of Board of Physical Education, RTM Nagpur University, Nagpur. So I welcome you, Dr. Datarkar sir, and I request you to take a charge as a chairperson for this session. And I also request Dr. Barit Bhattacharya sir to start his session. Dr. Barit Bhattacharya sir.
Hello.
Participants, please wait for a few minutes. Our resource person is facing some technical problem, so he will be connecting with us within 5 minutes. Just wait for few times. हॅलो अमित. हॅलो. हाँ सर, लोटे सर बोलिए. आम्ही कोणाला तरी बोलायला लावा आणि तोपर्यंत 5 मिनिट आपल्यापैकी दोघा तिघापैकी कोणाला तरी. ओके. 2-3 मिनिट कुठल्या एखाद्या विषयावर बोलावं ना. संजू भाई त्यांना खो खो वगैरे सांगा मला थोडं. लोटे सर तुम्हीच बोला ना. नाही मी आता माझ्या सांगा काहीतरी खो खोचे नवीन नियम वगैरे काहीतरी सांगा. नाही म्हणजे आपल्या संघटनेबद्दल सांगा काय केलं आम्ही ऍक्टिव्हिटी. नाही होत. हॅलो अमित सर, पेपर आटोपले का सगळ्यांचे पेपर प्रेझेंटेशन? हो सर. बर बर बर. गाड़ी तो दूसरी भी आली. खाना होने का चाहिए. करेंगे आराम से. करेंगे बोला आराम से. जो 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं. अच्छा ठीक. पेशेंस रखिए. वो ऑस्ट्रेलिया से अपने से ज्वाइन कर रहे हैं. उनका जो टेक्निकल इशू होने के कारण ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे. तब तक किसी को कोई सवाल होगा या किसी को कोई सजेशन होंगे तो दे कैन give their suggestions or any view regarding the conference. वो भी हो सकता है और होगा तो भी वो कॉन्फरन्सच्या बद्दल कोणाला काही मुळात असेल. खराब हो गया. माल खराब हो गया. पुढे काही अडचणी असतील त्या पण म्हणाव्यात किंवा पुढील कॉन्फरन्स कुठल्या विषयावर घ्यायची वगैरे काही सजेस्ट करायचं असेल तर ते पण आपण तोपर्यंत विचारविनिमय करूया.
Yes, Ashwini ma'am. Sir, can I give my feedback on this conference, sir? Yes, you can. Sir, it is a very wonderful organizing committees and all, very time to time. Actually, very interesting thing in this conference is when you are giving willing form, that is not willing form, actually it is the two papers will come when you ask for their declarations, sir. That is a very good initiative from your side, sir. That should continue for every conference and every workshops for journals, that qualified papers will come out, sir. It's very Ashwini ma'am, please unmute yourself. Oh, sorry, I was talking on mute. Sorry. Actually, can you hear me now, sir? Hello? Yes, sir, this is very wonderful organizing this conference, sir. First of all, I thank everyone giving me this chance to share my feelings. When I before one day before conference, you people asked your declaration form. That is a very good thing, and first time I come across it with this willingness form. With this, what will happen? Good papers will come out instead of copy papers. When you give willing, if anything copyright papers are there, they will go back. So this is very good initiation from your side, sir. Actually, this should continue for every conference and workshop. This type of willing form and declaration of their papers. That is very nice, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me Okay, this thank you, opportunity. thank you very much, madam, for your valuable remarks regarding this conference. Now, our resource person for 7th session is joined with us now. So again, I am giving introduction to Dr. Varid Bhattacharya, sir. He has done his MBBS from University of Jabalpur. He has done his diploma in psychological medicine, University of Calcutta. He has done his MD psychiatry, University of Calcutta in 1982. He has pursued his PhD from University of Illinois at Urbana-Champaign in 1988. He was fellow of the Faculty of Sports and Exercise Medicine, Ireland in 2003. He was also a member of the Faculty of Sports and Exercise Medicine, UK in 2007. He was a sports psychologist appointed in Sports Authority of India from 1988 to 1992. He has also worked as consultant psychiatrist in India, Australia, and UK. He was retired from Oxford Health NHS Foundation Trust UK in 2016, and he has also published many of his valuable publications in referred journals and popular magazines. So on behalf of organizing committee of this conference, I welcome Dr. Varid Bhattacharya, sir. And we have with us Dr. Vijay Datarkar, sir, as a chairperson for this session. He is a principal in Jyotiba College of Physical Education, Nagpur, and a chairman in Board of Physical Education, RTM, Nagpur University, Nagpur. So I also request Dr. Datarkar to take a charge as a chairperson in this session. Now I request Dr. Varid Bhattacharya, sir, to start his session. Dr. Varid Bhattacharya, sir. Hello, good afternoon. Yes, sir. To everybody. You are audible. Can you hear me? I can't see anything. Sorry. Yes, you are audible, sir. You are audible. All right.
Okay. Sir, can you please focus your camera on yourself? Trying to do that. I think Yeah. your front camera yeah. is not. Yeah. Yes, yes. Is it better? Now you are looking. Yeah. So you can hear me? Yes, sir. You are audible to us. Should I start now? Yes, yes, you can, sir. All right. Okay. Well, good afternoon, everybody. I would like to thank the organizers first for inviting me to this meeting. I'm going to talk on the psychological benefits of exercise, which is a favorite topic for me. For a long time, I have been working in psychiatry, mental health exclusively. So I have done recent work in sports psychology, but this is something where psychiatry and sports psychology merge. The physical effects of, the psychological effects of physical activity. So I'll divide my talk in 6 areas. After this brief introduction, I'll talk about definition of the terms. Then I'll mention some of the evidence that is available for the psychological benefits of physical activity. I'll then deal with the advantages of using physical activity or exercise for psychological benefits. Then I will provide some explanation for how it works. At the end, I'll mention the exercise prescription. That means how one should exercise to gain benefits. Coming to the introduction, exercise has been used for a long time for improving mental health. Talking about the United States, about 40% of Americans, adults, exercise regularly. They did a survey long time ago with the survey of the general practitioners, which is known as primary care physicians in the United States. And it was found that 85% of the GPs prescribed exercise for depression. About 60% prescribed exercise for reducing anxiety, and even for dealing with drug addiction. 43% of the GPs advise their patients to try physical activity or exercise. And many national and international organizations, including the FAMES, that is the International Sports Medicine Federation, the International Society for Sports Psychology, and the American College of Sports Medicine, they have developed guidelines on using exercise. Also, the American government, they have their guidelines, which was modified, revised, and published again in 2018. It's about how one should do physical activity. Now, coming to the definitions. Now, we use the different terms like physical activity and physical exercise. And is there any difference?
the Center for Disease Control in the United States, they said that physical activity is any bodily movement produced by skeletal muscles that results in energy expenditure. That means if you even move your finger, there is some energy expenditure. Technically, it is physical activity. And physical fitness means a set of attributes that are either health or skill related. Health related components of physical fitness is cardiorespiratory endurance, muscular endurance, muscular strength, body composition, and flexibility. And the skill-related components include agility, balance, power, speed, coordination, and reaction time. Now, we are going to talk about physical exercise, and exercise is defined as physical activity that is planned, structured, repetitive, and purposive in the sense that improvement or maintenance of one or more components of physical fitness is an objective. So a particular type of physical activity is defined as exercise. I'm going to mention the International Society for Sports Psychology's position statement on psychological benefits of exercise. According to this statement, exercise reduces state anxiety. It lowers the level of mild to moderate depression. There is reduction in traits such as neuroticism and anxiety with long-term exercise. Exercise can be used as an adjunct to treatment of severe depression. Various stress indices are reduced with regular exercise. And there is also beneficial emotional effects across all ages and in both genders. So exercise has wide implications. Coming to the US government guidelines on physical activity, which lists the health benefits of regular physical activity, which includes exercise. Now, they divided it into those benefits for which we have strong evidence, which I'm going to talk about. It's not only the psychological, I'll also mention the physical benefits of regular physical activity for which there is strong evidence. Now, it reduces the rate of early death. Exercise lowers the risk of coronary heart disease. It lowers the risk of stroke. There is less hypertension. It reduces the risk of adverse lipid profile. It helps to control diabetes. It reduces the risk of metabolic syndrome. It reduces the risk of colon cancer and also that of breast cancer. So there is strong evidence of the benefit of regular physical activity on physical health.
Moreover, regular physical activity helps to prevent weight gain and there is improved cardiorespiratory and muscular fitness. There is reduction in the prevention of falls. Now with fall, many elderly are adversely affected. They may have fractures. There is lower risk of depression, which is a psychological benefit, and better cognitive function, especially for older adults. So older adults who are likely to develop dementia, their risk is reduced. There is moderate to strong evidence that regular physical activity is associated with better functional health, especially in older adults. And there is reduced abdominal obesity. There is some evidence that regular physical activity lowers the risk of hip fracture, lowers the risk of lung cancer, lowers the risk of endometrial cancer, and it helps to maintain weight after weight loss. Some people can lose weight, cannot maintain that because they tend to gain weight again. But if they're doing regular physical activity, they can maintain the weight loss. There is increased bone density, and regular physical activity also improves the quality of sleep. However, we need to remember that it's better to avoid rigorous physical activity in the evening because it can impair sleep. So we have talked about the evidence for the beneficial effects of physical activity. I'm going to talk about the advantages of using regular physical activity or in particular exercise. They did a research in the at the University of Wisconsin in the US, comparing how expensive regular physical activity is in comparison to seeing a doctor or a psychotherapist. And they found that exercise is 4 times cost effective. So it's much cheaper as compared to psychotherapists. Because you see a psychotherapist, you have to pay them every time you see them. But if you buy, say, jogging shoes and join a fitness club, that is much cheaper. The other advantage of regular physical activity is it needs less supervision. It is self-directed. So once you know how to do it, you have been given the instructions, you are on your own. Physical activity has less side effects. So if you use any medication for treating, say, depression or anxiety, you are likely to get some side effects. But if you do physical activity, unless you overdo it, then you can sustain injuries, you can damage your knees. But if you follow the guidelines, then the side effects are relatively rare.
The other advantage of physical activity is that it brings about a feeling of control over the situation rather than dependence on the drug or the therapist. That means you are in control. So you do the physical activity as you like. But if you are taking some medication or if you are seeing a psychotherapist, each time you have to go back to them, or if the dose has to be adjusted of the medication, then you have to consult the doctor. So you are in control. Moreover, you may be able to develop new social contacts. Now, in Western countries in particular, loneliness is a big problem. You may not have anyone to talk to. But if you join a fitness club, a running club, then it helps to develop new social contacts. You may have new friends, you may have somebody to talk to. Now, in physical activity or exercise, the feedback is easy. Now, the benefits are clear from decreased body weight, increased jogging speed, or decrease in heart rate during activity. This motivates the person to continue doing it. Now, if you are not a regular exerciser and you start doing the activity, initially you may be able to run for, say, 5 minutes. After 2 weeks, you can run for 10 minutes. After a month, maybe for 20 minutes. So that tells you that you are making progress. If you are taking some medication, sometimes you are not sure how much progress you have made. So the feedback is quite immediate. Other advantage of physical activity or exercise is the interaction is usually by practical demonstration. The communication problem is minimal, and it is easier to work with immigrants, children, psychotics, and geriatric patients. Now, if you want to tell somebody how to exercise, you can just show them how to do it. The verbal communication may be minimal, but if you are going to see a doctor, if you are going to see a psychologist, a counselor, unless there is good communication, so you speak one language and your doctor is not very familiar with that language, so there may be problems with the communication. So this is very minimum in the case of physical activity. The other benefits include what I mentioned before, physical fitness. So even if you don't gain the psychological benefit that much, you are physically fit. So that is something. So I have listed the benefits of regular physical activity or exercise. Let's see how exercise works. There are psychological theories and there are theories regarding the physical aspect of exercise. The psychological theories there are many hypotheses, I would say, rather than theories, about how it works. One is mastery. That means there is a sense of success over the ability to perform the activity. So initially, somebody was not able to do, say, run for 100 meters, and now they are doing much more. That gives a sense of mastery. Then people develop patience. Exercise is a time-consuming process, and the subject learns to have patience. So
some people are quite impulsive. They want immediate gratification. But if you are doing regular physical activities, say for 1 kilometer, 2 kilometers, and gradually increase the distance, then you also gain more patience. The other hypothesis is that there is symptom relief, because regular exercise alleviates anxiety and brings about a feeling of well-being. So you feel less anxious, and that is the benefit of regular physical activity. The other explanation is that there is distraction. So exercise helps shift the focus of attention from physical symptoms. So when you're running, for example, you may feel distracted from your symptoms, from your worries. And that helps you to feel better. Also, exercise is a positive habit. So individuals substitute negative habits and maladaptive behavior by exercise. So people who are doing regular physical activity or exercise, they tend to drink less, smoke less. So because once they are more oriented for healthy things, healthy lifestyle, they reduce the negative habits. The other explanation is that there is generalization. That means the gain in exercise affects positively other aspects of life. Moreover, exercise can be considered as a type of meditation. The repetitive rhythm of exercise has the same effects of repeating a chant in meditation, like you repeat some mantra. So exercise is also a repetitive thing. So it helps in bringing the altered sense of consciousness. That means you feel different. Some people have underlying aggression. But when they exercise, it helps to discharge the repressed aggression. So they can discharge aggression, and that makes them feel better. We may know some people, when they're really angry, they may use a punching bag to release their aggression. The other aspect of exercise is that it helps to improve the self-esteem. Because if you are able to do something, it helps to improve your confidence and self-esteem. And that can be done by regular physical activity or exercise. I talked about the psychological theories. Let me mention some of the explanations offered by physiologists. The regular physical activity improves reaction to stress by reducing muscle tension, heart rate, changing the skin conductance, and making individuals desensitized to lactic acid and reduced production of lactic acid. And one popular explanation is that with regular exercise, there is release of endorphins. Now, talking about the heart rate in particular, we know the more fit one is, the lower their base rate of base heart rate is. So
the national level athletes may have heart rate of 50, 45, or even less. That means their heart is much more efficient. The last part of my talk is about how one should exercise. According to the latest guidelines, which have been modified many times in the last 30, 40 years, so now we say that one should do at least 150 minutes a week of moderate intensity exercise, or 75 minutes a week of vigorous intensity exercise. They used to say in the past that aerobic activity is the only thing that you should do to gain the benefits. But now they are saying aerobic as well as anaerobic activities are good. But if you are doing aerobic activity, it should be at least in the episodes of 10 minutes. That means you can do 3 times a day, for example, but at least for 10 minutes in one episode. And it should be spread all over the week, throughout the week. That means if you exercise for 150 minutes in one day and then don't do physical activity for the rest the 6 days, then that doesn't give you that much benefit. So it should be done ideally at least 30 minutes a day, 5 times a week. So that is the ideal thing. That brings me to the end of my presentation. One thing I would like to mention is that the Nagpur University Physical Education Teachers Association, they have just started a new website. And I think this is going to be a very useful source of information, and it will help the members to improve communication between themselves. So I'm sure it's going to be a grand success. And that's the end of my talk. And I would welcome any questions. But I want to mention that I've got some problems with hearing. So I may ask you to repeat or speak a bit loudly. Thank you. Okay, thank you very much, Barit sir. Mm-hmm. Thank you very much, sir. It was really wonderful session. Now I would like to ask to the participant, if you have any question, you can unmute yourself and you can ask your question directly to Barit sir. Participants, you can ask your question directly. Okay, I think there is no question from participants. Okay. So we will move ahead for the further procedure. Now I would like to invite Dr. Vijay Datarkar sir to express his views as a chairperson for this session. Dr. Vijay Datarkar sir. Thank you so much, sir. Dr. Barit Bhattacharya sir, thank you. And thank you. You are giving so much informative knowledge about our participants and us. Barit sir ने जो आपके टेक्निकल सेशन में जो पेपर हमारे को प्रेजेंट किया है यहाँ पर, तो उसमें डेफिनेशन और प्रैक्टिस नंतर उसके फिजिकल एक्टिविटी के क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स, हाउ टू वर्क, और
हमने साल ईयरली प्लान क्या होना चाहिए और इस सब के बारे में उन्होंने बताया। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के बारे में उन्होंने हमें को फोकस किया है कि रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या है। तो अर्ली डेथ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इससे हमको ये मिल सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज से काफ़ी सारी बेनिफिट्स हमको मिलते हैं और एडवांटेजेस है ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ओन डिसिप्लिन में हम रहते हैं, और लेस साइड इफेक्ट्स। यदि हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे पर साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं और हम कंट्रोल में रहते हैं। हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स हम डेवलप करते हैं। हमारा फंक्शंस, जो हेल्थ का फंक्शंस है, काफ़ी हम ये कर सकते हैं। और हम यदि रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमारा वेट मेंटेन कर सकते हैं, कैंसर से हम बच सकते हैं। हमारे को जो बहुत सारे लोगों को नाइट स्लीप का प्रॉब्लम होता है, वो स्लीप का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में डिटेल हमको on behalf of, I am so much thankful, sir. Thank you very much, sir. You are welcome. Thank you very much. Welcome, sir. Okay, thank you very much, Dr. Varid Bhattacharya, sir. And I am also very thankful to Dr. Vijay Datarkar, sir. Now we are moving ahead for the concluding ceremony. I request Dr. Varid Bhattacharya, sir, to please remain present with us. And now I would like to introduce our chief guest of the function, Dr. Sharyu Tewade, madam. She is a principal. Now presently she is working as a principal at Tewade College, Koradi. And she is very renowned personality in our field. She was also appointed as a dean, as a senate member, and a management council member in RTM and Nagpur University, Nagpur. So on behalf of organizing committee of this conference, I welcome Dr. Sharyu Tewade, ma'am. Now another guest with us, Dr. Vijay Datarkar, sir. He is also a principal in Jyotiba College of Physical Education and chairman, Board of Physical Education, RTM, Nagpur University, Nagpur. Now, I request Dr. Sharyu Tewade, madam, to express her views on this conference. Dr. Sharyu Tewade, ma'am. नमस्कार. आवाज येतोय का? हो मॅडम, येतोय मॅडम, येतोय. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, शारीरिक शिक्षक असोसिएशन व डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एज्युकेशन, डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालय दीक्षाभूमी,
डॉक्टर अण्णासाहेब गुंडेवार महाविद्यालय नागपूर, RS मुंडले धरमपेठ महाविद्यालय नागपूर, रेणुका कॉलेज बेसा, ज्योतिबा कॉलेज ऑफ शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, अरविंद बाबू देशमुख महाविद्यालय भारसिंगी आणि तायवाडे कॉलेज कोराडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आजच्या 2 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय आंतरविद्याशाखीय वेबिनारचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. वेबिनारचा विषय क्रीडा क्षेत्रातील दृष्टिकोन व त्याचा उपयोग. या वेबिनारमध्ये सर्वप्रथम सर्वांचे स्वागत करते. आजच्या या समारोपीय सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर विजय दातारकर सर आणि नुकतंच ज्यांचं फिजिओथेरपिस्ट म्हणून भाषण झालं ते बरी भट्टाचार्य सर, नुपेटाचे अध्यक्ष डॉक्टर विजय धोटे सर, नुपेटाचे सर्व सदस्य, सर्व आयोजित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आणि या आभासी पद्धतीने आयोजित वेबिनार मध्ये उपस्थित सर्व म्हणजे अभ्यासू, त्याचप्रमाणे ज्यांनी यामध्ये पेपर प्रेझेंट केलेले आहे या सर्वांचं या ठिकाणी पुनश्च एकदा स्वागत करते. काल 2 दिवसीय या आंतरशाखीय वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. काल डॉक्टर सुभाष चौधरी माननीय कुलगुरू राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेलं आहे आणि कोविड-19च्या या कालावधीमध्ये अतिशय आवश्यक अशा विषयाचं या ठिकाणी आयोजन केलं. त्याबद्दल सर्वप्रथम मी आयोजकांचं या ठिकाणी स्वागत करते की आपल्याला माहित आहे की आपण मागील मार्च 2020 पासनं अजूनही कोविड-19च्या या बिकट परिस्थितीमध्ये वावरत असताना की जो शारीरिक आणि मानसिक ताण जो आहे त्या ताणाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला आवश्यक असलेल्या विषयावर या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. काल पहिल्या सत्रामध्ये बीजभाषक म्हणून डॉक्टर नुपूर तिवारी यांनी अतिशय उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन त्या ठिकाणी केलेलं आहे की आज सगळ्यात महत्वाचं की आपल्यामध्ये असलेल्या क्षमता आपल्याला ओळखता आल्या पाहिजे, आपण स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे आणि स्वतः सगळ्यात महत्वाचं सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे की ज्याचा संपूर्णतः परिणाम आपल्या शारीरिक आणि मानसिकतेवर होत असतो आणि त्या अनुषंगाने आपण तयार असणं आवश्यक आहे. आपण त्यांनी उदाहरण दाखल दिलं आहे की जर आपण निगेटिव्हिटीचा विचार करत असेल, निगेटिव्ह विचार आपल्या डोक्यामध्ये असेल तर आपल्या चेहऱ्यावर त्याचं म्हणजे परिणाम आपल्याला दिसून येतो की नक्कीच हा कशात कुठल्या तरी विचारामध्ये गुंतलेला आहे. म्हणून स्वतः हसत खेळत या ठिकाणी सकारात्मक दृष्टिकोनातून जीवन जगावं अशा प्रकारचं या ठिकाणी नुपूर तिवारी यांनी मार्गदर्शन केलं आणि या सकारात्मकतेचा परिणाम मनुष्याच्या दैनंदिन कामकाजावर निश्चितपणे होत असतो आणि ते दैनंदिन कामकाज आपण चांगल्या प्रकारे करू शकलो पाहिजे. तेव्हा या सगळ्या गोष्टीचा निश्चितपणे आपण आपल्या जीवनामध्ये अंगीकार करावा अशा प्रकारचं वक्तव्य आपल्याला काल नुपूर तिवारी मॅडमनी या ठिकाणी दिलं होतं. आणि महत्वाचं म्हणजे की ज्या शारीरिक शिक्षकाकडे बघण्याचा जो काही समाजाचा दृष्टिकोन आहे तो कशा प्रकारचा आहे या अनुषंगाने जर आपल्याला ही संस्कृती जर वाढवायची आहे, क्रीडा क्षेत्राचं योगदान वाढवायचं असेल तर या ठिकाणी कुठल्या गोष्टीचा विचार करणं आवश्यक आहे. या संदर्भात डॉक्टर अरविंद झा यांनी सुद्धा उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन केलं. मानसोपचार तज्ञ म्हणून त्यांनी जे मार्गदर्शन केलेलं होतं त्यांनी उदाहरणादाखल सांगितलं की खरंच आपल्याकडे की अनेक ज्या स्पर्धा होतात, जिल्हास्तरीय स्पर्धा होतात, राज्यस्तरीय स्पर्धा होतात, परंतु बऱ्याच वेळा जोपर्यंत वरच्या स्तरावरचे गेम होत नाही, इंटरनॅशनल लेवलला जात नाही तोपर्यंत त्या टीम सोबत मानसोपचार तज्ञ नसतो. जर खऱ्या अर्थाने या मुलांचा विकास करायचा असेल तर प्राथमिक स्तरावरून ज्या ज्या क्रीडांच्या स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केल्या जातात त्या प्राथमिक स्तरापासून जर आपण मानसोपचार तज्ञ त्यांच्यासोबत दिलं, त्यांचं चांगलं समुपदेशन आपल्याला करता आलं तर निश्चितपणे खेळाडूंच्या मानसिकतेचा विकास निश्चितपणे होऊ शकेल, त्यांचं मनोबल त्या ठिकाणी वाढवू शकेल. अनेक ज्या गोष्टी सायकोलॉजिकल दृष्टिकोनातून विचारात घ्यायला पाहिजे त्या ते या ठिकाणी विचारात घेऊ शकतात आणि म्हणून तशा प्रकारचं आयोजन या ठिकाणी आपल्याकडे सुद्धा करायला पाहिजे. पाश्चात्य देशात आणि भारतीय देशात आपण जेव्हा अनेकदा तुलना करतो क्रीडा क्षेत्रात तर त्याच बाबतीत आपण मागे पडलेलो असतो. याचाही विचार आपण या ठिकाणी करायला पाहिजे आणि त्या
ठिकाणी अशा छोट्या छोट्या टीम सोबत सुद्धा मानसोपचार तज्ञ, जसं आपण माहितीये की क्रिकेट असेल तर फिजिओथेरपिस्ट राहतो, तसंच सगळ्या ठिकाणी या जर लोकांची नियुक्ती केली तर या क्रीडा क्षेत्राचा विकास आपल्याला निश्चितपणे चांगल्या प्रकारे वाढवता येईल. आत्ताच बरीक भट्टाचार्य सरांनी आपल्याला अतिशय चांगलं असं मार्गदर्शन केलेलं आहे की तुमच्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटी कशा असायला पाहिजे, तुम्ही फिजिकल ऍक्टिव्हिटीचा तुमच्या शरीरावर काय परिणाम होऊ शकतो, आणि सगळ्यात महत्वाचं की त्याची कार्यक्षमता जर वाढवायची असेल तर फिजिकल ऍक्टिव्हिटी ह्या अतिशय महत्वाच्या आहे. तुमची जी कार्यक्षमता जी आहे त्यांनी अनेकशे दाखले दिलेले आहे की तुम्हाला अनेक आजारापासून, हायपरटेन्शन पासून, मधुमेहापासून, त्याचप्रमाणे लंग्स कॅन्सर आहे, अनेक गोष्टी त्यांनी सांगितलं की तुमच्या या व्यायामाचा, तुमच्या या याचा फिजिकल ऍक्टिव्हिटीचा तुमच्या संपूर्ण जीवनावर आणि तुमच्या शारीरिक तसेच कार्यक्षमतेवर सुद्धा त्याचा परिणाम होऊ शकतो. म्हणून दैनंदिन जीवनामध्ये आपण या ठिकाणी फिजिकल ऍक्टिव्हिटी वाढवणं अतिशय आवश्यक आहे. आज आपण बघतोय कोविड-19च्या या कालावधीमध्ये सगळं कामकाज आपलं ऑनलाईन सुरू आहे आणि मुलांना सुद्धा खेळाच्या मैदानावर जाता येत नाही. कुठल्या पण त्याच्यामुळे शारीरिक ज्या त्यांच्या ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या सगळ्या थांबलेल्या आहेत आणि म्हणून मुलांचा जो एक चिडचिडेपणा आहे तो अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेला आपल्याला बघायला मिळतो आहे. तेव्हा हे सगळं जर आपल्याला करायचं असेल तर या शारीरिक दृष्टिकोनातून आपण या सगळ्या गोष्टीचा विचार करणं आवश्यक आहे. आणि प्राथमिक स्तरापासनं आज आपण बघतोय की फिजिकल जे आहे, फिटनेस आहे किंवा शारीरिक क्षमतांचा विकासाच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा एक गोष्ट आपल्या लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपल्याकडे शारीरिक शिक्षकांची फार कमतरता आहे. आज आपण पाहतो की शाळांमध्ये 1500-2000 विद्यार्थी आहेत आणि त्याच्या मागे एक फिजिकल डायरेक्टर असतो. एक फिजिकल डायरेक्टर या सगळ्या लोकांचं मार्गदर्शन, या विद्यार्थ्यांच्या फिटनेसकडे लक्ष देऊ शकत नाही. तेव्हा याही दृष्टिकोनातून फिजिकल क्षेत्राच्या लोकांनी पुढे येऊन या ठिकाणी आपण बघतोय की ज्यांच्याकडे आज जी ग्राउंडवर जाणारी मुलं आहेत त्यांच्या मागे कोचेस आहे, पण जी स्लम एरियामध्ये राहतात त्या मुलांना चांगल्या कार्यक्षमता आहे. आज मी बघते स्लम मध्ये आपण पाहतोय की स्लम फुटबॉलमध्ये सगळ्यात जास्त स्लम परिसरातले मुलं जेव्हा बघतात त्याच्या कार्यक्षमता, त्यांची धावण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात असते. या सगळ्या लोकांना चांगल्या प्रकारचे कोचेस, चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन जर मिळालं तर निश्चितपणे या क्रीडा क्षेत्रामध्ये सुद्धा अजून प्रगती आपल्याला करता येऊ शकते. आणि म्हणून या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे या क्षेत्राचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण सर्व लोक अतिशय प्रयत्नशील आहे. अतिशय चांगल्या अशा आभासी पद्धतीने का होईना आपण वेबिनारचं आयोजन केलं. आपण बघतोय चांगले चांगले पेपर्स या ठिकाणी प्रेझेंट झालेले आहे. काल आपण पेपर प्रेझेंटेशन आणि आजच्याही सत्रामध्ये पेपर प्रेझेंट केलेले आहे. चांगल्या विषयाचे पेपर्स या ठिकाणी आलेले आहे. या संपूर्ण पेपरच्या अनुषंगाने एक विशिष्ट असं त्याचा ऍब्स्ट्रॅक्ट आपण निश्चितपणाने तयार करायला पाहिजे की या ज्या काही निष्कर्ष या रिसर्च पेपरच्या माध्यमातून आपल्या पुढे आलेले आहे, या रिसर्च पेपरच्या माध्यमातून आलेले जे निष्कर्ष आहे या सगळ्या निष्कर्षांना एकत्रितपणे संकलित करून की या क्रीडा मंत्राला किंवा क्रीडा विषयक धोरण जे ठरवतात. आणि सगळ्यात महत्वाची आनंदाची गोष्ट ही आहे की आज नागपूर शहरामध्ये आपल्याकडे क्रीडा मंत्री आहे आणि या क्रीडा मंत्र्यापर्यंत आपल्या ज्या काही भावना आहे, आपलं जे काही मत आहे, आपण काढलेले जे काही निष्कर्ष आहे ते निष्कर्ष आपण त्यांच्या पुढे पोहोचवू शकतो आणि त्या अनुषंगाने या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी निश्चितपणे आपल्याला मदत करता येईल. अशा चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी संकलन झालंय, त्याच्या प्रकारचं त्याचं आपण कालच प्रकाशन देखील केलेलं आहे. इतकं चांगलं पेपर्स आणि इतके चांगले निष्कर्ष जर आपल्याला आले तर या विविध खेळातील असलेले जे काही मार्गदर्शक आहे, विविध गेम मधले कोच आहे, या सगळ्यांकडनं हे सगळं संकलित करून आपण शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करायला पाहिजे. आताच नुकतंच बरीक भट्टाचार्य सरांनी एक सांगितलं की नुपेटा ही चांगली संस्था आहे, नुपेटा चांगलं काम करते आहे, चांगलं आयोजन करत आहे. तर या नुपेटा या संघटनेची एक चांगली वेबसाईट असावी आणि या वेबसाईटच्या माध्यमातून होणाऱ्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहे त्या ऍक्टिव्हिटीज इतरांपर्यंत पोहोचवाव्या. ऍक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून अजून काही सजेशन आपल्याला येतील ते इतरांपर्यंत पोहोचता येईल. अतिशय चांगलं असं सजेशन या ठिकाणी भट्टाचार्य सर यांनी आपल्याला दिलाय. तो प्रयत्न निश्चितपणे नुपेटामध्ये जी काही कार्य करणारी मंडळी आहे अतिशय
क्रीडा क्षेत्रामध्ये नावाजलेली आहे, क्रीडा क्षेत्रात चांगलं काम करण्याची त्यांची इच्छा आहे, ते निश्चितपणे करतील अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करते. आणि या 2 दिवसीय वेबिनार मध्ये उत्कृष्ट अशा वक्त्यांनी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या सगळ्या वक्त्यांनी या ठिकाणी सहभाग घेऊन उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचा निश्चितच आमच्या क्रीडा क्षेत्रातील क्रीडा मंडळीला, या सगळ्या लोकांना निश्चितच फायदा होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करते. आणि माझा जरी शारीरिक शिक्षणाशी तेवढा संबंध नसला तरी एक महाविद्यालयाचं आयोजन सहभाग म्हणून या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी नुपेटाने दिली, तेव्हा त्या आयोजकांचं मी या ठिकाणी आभार मानते आणि माझी रजा घेते. धन्यवाद. Okay, now thank you very much, Sharyu ma'am. In your talk, you have mentioned that there must be a website for our organization, for NUPETA. Now, I'm very glad to inform you that we already done this task, and I am very happy and also invite you to inaugurate our website by declaring and also Dr. Bhattacharya sir to inaugurate our website. Hello. I'm so pleased to learn that the website is going to start now, and I wish to declare it as functioning. I hope I haven't seen. I'm unable to see it from here. Excellent. Yes. Thank you, sir. Thank you. So it's functioning now. Thank you. वेलकम सर. मॅडम तुम्ही पण वेबसाईटचं उद्घाटन झालं असं डिक्लेअर करा. हा, मराठीतच. नुपेटाच्या द्वारे जी इच्छा व्यक्त केली होती ती लगेच ऑलरेडी वर्किंग झालेलं असल्यामुळे ताबडतोब आम्ही वेबसाईटचं लोकार्पण झालेलं आहे असं मी या ठिकाणी जाहीर करते. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. Okay, one more thing. We have received almost 170 research paper for publication in this international conference. Now, again, I request our dignitaries to inaugurate our research journal. Okay, I again request Dr. Bhattacharya sir, Dr. Sharyu Taiwade madam, Dr. Vijay Datarkar sir, Dr. Jhote sir to inaugurate our proceeding and journal. Okay, so thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now, I would like to invite our guest of honor, Dr. Vijay Datarkar sir, to
preside over the function. Dr. Vijay Datarkar, sir. International Multidisciplinary Conference on Contemporary Approaches and Application in Physical Education and Sports Sciences, March 26, March 27. 2 दिन ये हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूडिंग फंक्शन के आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर शरीय मैडम, डॉक्टर बरीड भट्टाचार्य जी, हमारे निपुटा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धोटे सर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर AP जोशी सर, सेक्रेटरी डॉक्टर DC वानखेड़े सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संजय चौधरी सर, अमित टेम्बुर्ने सर, और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम, और इस जो हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनके एसोसिएशन में हुई है, ऐसे डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि नागपुर, अन्ना साहेब गुंडेवार कॉलेज नागपुर, RS मुंडले धरमपेट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज नागपुर, रेणुका कॉलेज बेसा नागपुर, तायवाड़े कॉलेज कोराडी, अरविंद बाबू देशमुख महाविद्यालय बारसिंगी और ज्योतिबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन नागपुर। मैं हमारे निपुटा का, हमारे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेने की बात शुरू हुई कि इस पैंडेमिक में सभी लोग मैक्सिमम लोग अपने घर से या कॉलेज में भी ऑल्टरनेट ये हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ लोग एक्टिव हो जाए, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस का, और हमारे यहाँ पर नागपुर विद्यापीठ में भी इक्वलेंस सर्टिफिकेट का भी ये होता है, तो उसके लिए भी हमने एक कॉन्फ्रेंस प्लान की और वो प्लान करके हमारे नुपिटा ने उसको मूर्त स्वरूप दिया करके मैं नुपिटा का शुक्रगुजारी हूँ कि ये 2 दिवसीय इसमें, और हमारे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिसोर्स पर्सन करके डॉक्टर बरीड भट्टाचार्य जी, नुपुर तिवारी जी, प्रोफेसर जयश्री आचार्य मैम, कर्नल अरविंद झा, इन्होंने हमारे को मार्गदर्शन किया। और इस कॉन्फ्रेंस में टोटल पार्टिसिपेशन करीब 257 वगैरह पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, और रिसर्च पेपर 170 और प्रेजेंटेशन 55 लोगों ने किया। तो और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सब एक्टिव होके एक अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन और अच्छे जनरल रिसर्च पेपर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर ये हुए, और उसको हमने यहाँ पर प्रोसीडिंग भी यहाँ पर उसके किए। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए हम और भी आगे पैंडेमिक पीरियड खत्म हो जाने के बाद भी ऑफलाइन भी, एक्चुअली ये ऑफलाइन ही हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, पर कोविड के वजह से फिर ऑनलाइन हमें लेना पड़ा। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं फिर से सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और हमारे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के सभी लवर्स, इनका अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे 2 शब्द को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Dr. Vijay Datarkar sir, for expressing your valuable views on this conference. Now we are at the end of the conference.
and we are very delighted for the overwhelming response to the this conference. So I congratulate all the organizing committee members, all the participants, and all the invitees for being part of this conference. Now, I would like to invite Dr. Shyam Charde sir to propose the vote of thanks. Dr. Shyam Charde sir. अमित सर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि हमारे राजसंत तुकडोजी जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजित किया गया था। इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे जो स्पीकर्स यहाँ में अच्छी जानकारी यहाँ दी है। आज के इस क्लोजिंग सेरेमनी में जो हमारे स्पीकर थे डॉक्टर बरित भट्टाचार्य जी, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में अच्छी जानकारी दी, तो आज कोविड-19 में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ा सा हमें हमारे साथ जोड़ने में समय लगा। हम उनके लिए थोड़ा सा आभार खेद प्रकट करते हैं। मैं उनका एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकालकर हमारे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीकर के रूप में हमें अच्छी जानकारी दी। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ एसोसिएशन की तरफ से। उसी प्रकार से हमारे इस क्लोजिंग सेरेमनी के लिए जो हमारे प्रमुख अतिथि थे डॉक्टर प्राचार्य शरीर तायवाड़े मैडम, जो कि हमें फिजिकल एजुकेशन का महत्व, कोचेस का महत्व और आज के इस कोविड-19 में फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षण का कितना ज्यादा महत्व है खिलाड़ियों के लिए, उनका उन्होंने अच्छा हमें यहाँ पर प्रवचन दिया। उनका भी हम एसोसिएशन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से आज हमारी इस क्लोजिंग सेरेमनी में जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य डॉक्टर दातारकर जी का, जिन्होंने अपना समय निकालकर हमें यहाँ समय दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से आज हमारे इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे जो स्पीकर्स यहाँ हमारे साथ जुड़े, हमें हमारा उत्साह बढ़ाया और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी उत्साह बढ़ाया। उनका भी हम अपने फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से हमारे राजसंत तुकडोजी जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन के जितने ऑर्गेनाइज कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी, टेक्निकल कमेटी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए जी जान मेहनत की, उनका भी हम नूटा की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से हमारे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने हमें सहयोग किया, उनका भी हम नूटा की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। हम विशेष आभार तो उनका करते हैं जो कि हमें हमेशा कॉन्फ्रेंस करने के लिए अलग अलग महाविद्यालय के प्राचार्य, मैनेजमेंट जो आगे आकर हमें हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। विशेष करके आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि, अन्ना साहेब मुंडेवार कॉलेज नागपुर, RS मुंडे धर्मपेठ आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज नागपुर, रेणुका महाविद्यालय बेसा, ज्योतिबा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नागपुर, तायवाड़े कॉलेज कोराडी, अरविंद बाबू देशमुख महाविद्यालय बारसिंगी, हमेशा ये महाविद्यालय हमें हमेशा सहयोग करते हैं और हमें हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आगे भी इस प्रकार से हमारा उत्साह बढ़ाएगा, हम उनसे आशा करते हैं। खास मैं अंबेडकर महाविद्यालय के मैनेजमेंट, प्राचार्य और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर अरविंद जोशी सर, जिन्होंने हमारे इस पूरे टेक्निकल के लिए हमें अपना महाविद्यालय उपलब्ध करके दिया, उनका भी हम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। विशेष करके मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन पत्रकार का जिन्होंने हमारे इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा अपने पेपर में महत्व दिया, अपनी प्रेस नोट रिलीज की, उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया, उनका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही आगे हमें हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। हमारे उस सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, जो हमारे इस 2 दिवसीय सेमिनार कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, उनका भी हम नूटा की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा, आगे भी हम इस कोविड-19 में इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस रहते रहेंगे, आप सभी हमारे साथ ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ और आभार व्यक्त यहाँ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
Okay, thank you very much, Dr. Shyam Charde sir, for giving such a wonderful vote of thanks. Now there is one announcement for the participants that we have published all the papers almost, and we will receive all the copies of the journal very soon. And I have provided a feedback link in chat box, and I'll also provide the feedback link in Telegram group also. You just send your feedback and you will receive an e-certificate within 7 days from the date of submission of feedback on your registered mail ID. And I also proud to announce that we are also providing the hard copies of the certificate and hard copies of the journals at your place as soon as we receive the hard copies of our journals. So it will be reached on your address. Okay, so thank you very much to all. And now I declare that this international conference is over. Thank you.